हेलो ऑल। डू वी ऑट टू बी साइंटिफिक? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर काफ़ी सारे ओपिनियंस बन सकते हैं, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज आ सकते हैं। और यही आज हमारे डिबेट का जो मेन थीम रखा गया है, जिसके ऊपर एक साइड पे राजकुमार है, जिनको आप वर्ल्ड ऑफ साइंस चैनल से जानते होंगे। उनके काफ़ी इंगेजिंग कंटेंट रहते हैं, इंस्टाग्राम पे आप देख ले या फिर आप कहीं और देख लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है। और साथ ही साथ हमारे साथ भार्गव हैं। भार्गव जो कि लाइक साइंस में ही अपनी लाइक पीएचडी कर रहे हैं, बेसिकली साइंटिफिक फील्ड में ही कर रहे हैं, बट आल्सो ही टॉक्स अबाउट व्हाट इज एग्जैक्टली साइंस, फिलोसफी ऑफ साइंस। ही आल्सो टॉक्स अबाउट लाइक रिलीजन, और रिलीजन के बहुत सारे पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो आज के जो टॉपिक है, अगर आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, सो यू ऑलरेडी नो दैट Rajkumar is going to speak like for like in the motion, for the motion, and Bhargav for the against. तो ये हम लोगों का स्ट्रक्चर चलने वाला है। अब आज क्या क्या पॉइंट डिस्कस होंगे, ये मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर क्या स्ट्रक्चर रहेगा उसके बारे में मैं थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ। अगर हम लोग टॉपिक्स के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि डू वी बिलीव द प्रपोजिशन गॉड डज नॉट एग्जिस्ट और देयर आर नो गॉड्स। दूसरा हम लोग फिर बात करेंगे, डू यू बिलीव द प्रपोजिशन साइंस प्रोवाइड्स ट्रू और अप्रोक्सीमेटली ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जर्वेबल एंड अनऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट ऑफ अ माइंड इंडिपेंडेंट वर्ल्ड। तीसरा होगा व्हाट इज एविडेंस। चौथा होगा डू वी ऑट टू बी साइंटिफिक। फिफ्थ होगा साइंटिफिक टेम्परामेंट इन इंडिया, व्हाई डू वी नीड साइंस कम्युनिकेशन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है एंड आई विल बी मॉडरेटिंग इट टुडे। अब स्ट्रक्चर ये रहेगा कि टोटल हमारे पास ये 5 सेक्शन है। हर सेक्शन को हम लोग 20 से 25 मिनट्स देंगे, और अगर जब भी ये टाइम लिमिट क्रॉस होगा, देन आई विल आस्क बोथ ऑफ देम कि हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे फॉरवर्ड करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ऑडियंस में से बहुत सारे लोगों को डाउट्स वगैरह हो सकते हैं किसी भी टाइम पे, सो व्हाट यू कैन डू, मैंने पिन भी कर दिया है वो कमेंट, आप वो देख सकते हैं, जिसमें आपको किसी से भी क्वेश्चन पूछना है। लेट्स से यू वांट टू आस्क क्वेश्चन टू राजकुमार, सो जस्ट राइट टू राजकुमार एंड देन क्वेश्चन लिखेगी, लिख दीजिएगा। या फिर भार्गव से तो सेम प्रोसेस। अभी 2-3 क्वेश्चन आए, बट उनको अभी तुरंत मैं नहीं लूंगा, बिकॉज एक बार डिस्कशन स्टार्ट हो जाए, उसके बाद जो रिलेवेंट पॉइंट्स लगेंगे उस हिसाब से मैं क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। अब ये डिबेट स्टार्ट होने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ताकि बहुत सारे जो एक बायस्ड माइंड लेकर आए, उनके माइंड से ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। सबसे पहले राजकुमार, क्या आप रिलीजन के अगेंस्ट है? आर यू एंटी रिलीजन? नो। नो। ओके। शॉर्ट आंसर नो। भार्गव, क्या No, आप साइंस के अगेंस्ट है? no, not at all. नॉट एट ऑल। ठीक है, तो जो लोग अपना बायस माइंड लेकर आए हैं, कृपया ये जान लीजिए कि दोनों में से कोई एंटी नहीं है किसी भी चीज के। यहाँ पर एक ओपन माइंडेड डिस्कशन और डिबेट होने वाला है। तो सबसे पहले भार्गव, आप लाइक ओपनिंग रिमार्क्स देंगे। हमारा जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट फिर से मैं डिस्क्राइब करूंगा, डू यू बिलीव द प्रपोजिशन गॉड डज नॉट एग्जिस्ट और देयर आर नो गॉड्स। उसके ऊपर आप एक बार स्टार्ट करिए। 3 मिनट, 3 से 3.5 मिनट आप ले सकते हैं, एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड टू राजकुमार। Yeah, right. So basically, the reason why I included this question is because God does not exist or there are no gods. ये एक metaphysical proposition है. It talks about existence of something, and that is something that naturalism definitely believes in. That God does not exist or there are no gods, because naturalism का ये मानना है that everything that is all the things on events in the universe are natural, can be explained by natural causes or natural explanation दे सकते हैं. So अगर आप इस बात में विश्वास रखते हो, then we can move towards naturalism. उसमें भी ontological और methodological भी है. But basically that's the baseline कि अगर आप ये विश्वास रखते हो कि God could have created the universe or God does exist and he's somehow the creator, तब आप naturalist नहीं रहेंगे, because naturalism entails atheism. God cannot be a part of explanation in naturalism. So that's why the question, that do you believe God does not exist or there are no gods, or at least are you agnostic towards the existence of God? ये भी चलेगा. It doesn't have to be atheism, but at least agnosticism भी चलेगा. So that is why I asked the question or included that. ओके ओके, नाइस। राजकुमार। सो हाय एवरीवन। पहले तो मैं क्षितिज ने जो कहा उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा कि हर चीज पे जरूरी नहीं है कि आई एम फॉर एंड भार्गव इज फॉर अगेंस्ट। ऐसा नहीं है। कुछ प्रोपोजिशंस में ये क्लियरली डिस्कशन होने वाला है, बिकॉज कोई भी एक पर्टिकुलर स्टैंस वहां पे है ही नहीं। अगर ये फर्स्ट प्रोपोजिशन की बात करें तो आई वाज बिट सरप्राइज्ड कि क्यों मुझसे ये पूछा जा रहा है, बट नाउ दैट भार्गव हैज एक्सप्लेन्ड कि इट बेसिकली लेज अ फाउंडेशन फॉर द फर्दर डिस्कशन, इट मेक्स सेंस। नाउ
Uh, yeah. Do I need to answer that question right now, or just the introductory Um, remark? yeah, I mean, if you want, you can answer it. But even if you maintain an agnostic stance, ki, I neither believe God exists nor do I believe God does not exist, that also works. So, Or you can be atheistic. That's fine. so firstly, I would like to ask, what is God according to you? Only then I can answer if it is So or not. according to so I'm an agnostic. I don't have a definition of God as such, but there are different models of God in philosophy. जैसे कि God is the necessary being. या फिर God is all powerful, all knowing, benevolent. Or if you go to monistic propositions, the monism वगैरह आ जाता है. But basically, if you believe in any divine element or any supernatural aspect that can explain the universe, it doesn't have to be God. That's just like a placeholder. It could be Brahma, it could be Tao, it could be Plato's demiurge, whatever be the case. Anything that is supernatural, if you believe in such divine elements, then in that case you cannot be a naturalist. So you'll at least have to be agnostic, or you'll have to deny that explicitly. Ki God does not Right. exist, or I'm agnostic. So I have when I talk in, I'll basically talk in general terms. I won't talk in terms and labels and position philosophical structures. I'll talk in general terms. There are two answers for that. Number one answer is very short, short answer. There's just three words. I don't know. Okay, Very agnostic. plain and simple, and that is Yeah. basically agnostic. The long answer is, of course, explanatory. Why I don't believe, I don't know anything about God, because there are, certain parts of my life where I think these are the possibilities why God must exist, or why it can exist, and there are also possibilities why God shouldn't exist. So there are things that make sense, there are things that does not make sense. So you can call me agnostic to answer that. I'm not atheist. That is something that I wanted to clear right from the first debunk video that I've made. People people had this misconception that I am atheist, and somehow जैसा कि क्षितिज ने पहले ही पूछ लिया कि am I against religion, that I cleared. No, I'm not against religion. I'm not against the idea of God, because atheism में अगर आप देखेंगे भार्गव, जिस तरीके से आप डिफाइन किए हो एंड बाकी जो लोग डिफाइन करते हैं, दोनों ही मेरे को थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है. Because if I say I lack the belief of God, I also don't fall there. Uh, if you say I believe that God does not exist, that is also a complete, position of negation. So I don't comply with that. I just don't know. I'm agnostic to answer that. Yes. Okay, yeah, perfect. Yeah, agnosticism also works because tab jaake, if we neither believe in the proposition God exists, nor do we believe in the proposition God does not exist, then we can get that claim outside naturalism, and then we can move to naturalism. Because then Yeah. baki ke jo structure hoga, it will not be focused on theology or philosophy of religion. So we are, Hmm. by the way, eliminating philosophy of religion from this discussion right from the start. इसलिए ये question जरूरी था. Otherwise, Yeah. then naturalism eventually goes into, so somehow when you end up at some regress, people install the idea of कि, there is a creator, there is a necessary being. तो वो Hmm. हम Hmm. इस discussion से ही eliminate कर देंगे. So now we Hmm. can move towards naturalism. So इसलिए that was the point of introducing this question. Hmm. But yeah, good to know that you're agnostic. I'm agnostic. Just as you said, I don't see any arguments that are convincing for me to believe in the existence of God, and I don't see any good arguments that are convincing enough to believe in the non-existence of God. So Correct. therefore, my own position on the existence of God is agnostic. Yeah. So I suspend judgment. Yeah, perfect. So I guess we can move to, with that out of the way, we can move towards the second question, or second proposition rather. ओके, इट्स गुड दैट वी आर ऑलरेडी डन विद द फर्स्ट वन, तो अब बाकी Right. सारे के लिए हमारे पास अच्छा खासा But टाइम I बच had जाएगा. certain, so now that we all are agnostic, मेरे वो questions का कोई मतलब नहीं, because मेरे questions आपके questions बन गए. But I had Okay. certain questions जो मुझे पूछने थे भगवान के बारे में. I was like, Bhargav is a theist. मैं ऐसा assume कर रहा था. तो मेरे पास कुछ सवाल थे जो मैं पूछने वाला था. But now that same party में हम लोग, so it's okay. Right. Yeah, basically the reason why I'm not a theist is because even if you consider God of philosophers, if you ignore all the religions, even if all the religions are false, God can still be true. Even if you consider Hmm. that as God of Hmm. philosophers, those maybe Hmm. there are multiple arguments in favor of theism and against theism, against being the arguments in case of agnosticism and atheism. तो दोनों साइड पे आर्ग्यूमेंट है. फॉर एग्जांपल द प्रॉब्लम ऑफ इविल, दैट्स अ वेरी गुड आर्ग्यूमेंट Yeah. अगेंस्ट omnipotence, omniscience, benevolence.
It basically tackles benevolence. Omniscience ke khilaf we have Pike's argument, so that also kind of falsifies the you can say the triadic model of God, जो तीन attributes से हम्म बना. Now things get kind of trickier when you move towards monistic concepts. That goes into way into metaphysics की divine simplicity वगैरह वगैरह बहुत चीजें हैं उधर. But there are also counter arguments. So it makes no sense to discuss about philosophy of religion if I'm an agnostic, because there will not be any place where I will defend theism, and there will not be any place where I will defend atheism, because both of the positions are unconvincing for me. या So yeah. बट आपके कंटेंट जब मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, it tends to be more on the theistic side than on atheistic, because आपके ज्यादातर कंटेंट जो मैंने देखा है, मैं I've been following you very recently, ऐसा नहीं कि बहुत समय से आपको देख रहा हूँ, बट जो भी आपके कंटेंट होते हैं, it's either against atheism some way, कुछ हद तक, या एथिस्ट, सर्टन एथिस्ट, मैं ये भी नहीं कहूँगा कंप्लीटली एथिज्म के अगेंस्ट, सर्टन एथिस्ट, एंड कुछ कंटेंट जो एथिज्म को थोड़ा फेवर करते हैं, थोड़ा प्रमोट करते हैं. तो इस वजह से आई वाज डाउटफुल अबाउट योर स्टैंड. Right, yeah. अच्छा, इसमें एक और चीज भी होती है कि देयर इज वन थिंग, एक तो होता है स्टडी ऑफ गॉड जिसमें एथिज्म थीज्म होता है, बट आई गेस रिलीजन की स्टडी एक अलग ही चीज आ जाती है, वो Perfect. शायद Yeah. उस पर्टिकुलर चीज में फॉल नहीं करती है. Correct. अच्छा. Yeah. So basically, theology is the study of the nature of God or about doctrines of God, whereas religious studies is the study of people who talk about God. It's the study of culture, anthropology, traditions, kaise evolve, rituals, customs. Philosophy of religion is a part of religious studies. But in theology, that's the main aspect. So theology, it can be subsumed under religious studies, but religious studies is actually a scientific discipline. We apply scientific methods to study the evolution of cultures. यहाँ पर भी evidence जमा करना पड़ता है. We need to build hypotheses and search for evidence, archaeological हो, linguistic हो. So religious studies is very much an academic discipline. Even the term religion itself has definitions in three aspects: psychological, intellectual, sociological. और उस पर बहुत से स्कॉलर्स हुए हैं, जैसे कि एमिल डर्कहाइम, देन वी हैव सिगमंड फ्रॉयड, देन वी हैव श्मिट. बहुत से स्कॉलर्स हैं जो रिलीजियस स्टडीज में आते हैं, बट वो पूरा एक अलग ही फिर ब्रांच बन जाता है, एंड दैट्स नो लॉन्गर कनेक्टेड टू थियोलॉजिकल डिबेट्स. So yeah, my content is more about religious studies and philosophy of religion. But it's not directly related to theology. जैसे कि I won't discuss argument by Thomas Aquinas or defend it or oppose it. So yeah, that's the baseline. Cool. ग्रेट. That makes sense. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्योंकि आई थिंक टाइम भी हम लोग लिमिट पे रीच कर ही गए हैं. Okay. तो सेकंड जो हमारा प्रपोजिशन है वो है, डू यू बिलीव द प्रपोजिशन साइंस प्रोवाइड्स ट्रू और अप्रोक्सीमेटली ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑब्जर्वेबल एंड अनऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट ऑफ अ माइंड इंडिपेंडेंट वर्ल्ड? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि राजकुमार आप अपने व्यूज दे इसके ऊपर, एंड देन आई विल आस्क भार्गव. Sure. So, no, I don't think science provides the true description of reality, be it the observable reality or unobservable reality. अभी साइंस उस चीज के लिए सक्षम नहीं है पूरी तरीके से. एंड ऑल्सो मैं अप्रोक्सीमेट ट्रूथ भी नहीं कहूंगा उसको, कि इट डिस्क्राइब्स द अप्रोक्सीमेट ट्रूथ, बिकॉज इट्स अ वेरी वेग थिंग टू से. अगर मैं कहता हूँ कि साइंस और साइंटिफिक थियरी और पर्टिकुलर थियरी इज क्लोजर टू ट्रूथ, हाउ क्लोज टू ट्रूथ, कितना पास है, कितना कितना और रास्ता कवर करना है, या यू नो हाउ क्लोज हाउ फार. सो दैट इज वेरी वेग थिंग टू से कि इट डिस्क्राइब्स द अप्रोक्सीमेट ट्रूथ अबाउट द रियलिटी. So yeah, I don't think science provides the true description, and never जो भी साइंस को जानने वाला सही में साइंस में कुछ काम कर रहा है, या साइंस को समझता है, या साइंस को पढ़ता है, नेवर वो कभी क्लेम नहीं करेगा कि साइंस नोज द अल्टीमेट रियलिटी, और साइंस क्लेम्स टू नो द अल्टीमेट रियलिटी. वो हमेशा एक्सेप्ट करेगा कि देयर आर थिंग्स दैट आर फॉर नाउ बियॉन्ड साइंस. साइंस के पास उसका जवाब नहीं है. एंड सो या, दैट इज व्हाट आई विल से. ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू भार्गव, एक क्वेश्चन आया है राजकुमार के लिए ही, थोड़ा सा साइंटिफिक साइड ज्यादा है, फिर भी लाइक मैं एक बार ले लेता हूँ बिकॉज लेते रहे क्वेश्चन तो बेटर रहेगा. The question is to Rajkumar. Some people are claiming that in E equals mc square, if we put m is equals 0, then E is equals 0. Then they are saying that this E equals 0 is nothingness. What's your viewpoint? And Bhargav, you can also add if you want. If you put m is equals to 0,
नहीं, m is equals to 0 आप कैसे डालेंगे? Are we talking about the zero rest mass? एग्जैक्टली ये मतलब कि प्रॉब्लम यही है कि अगर हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर इसमें लेकर चले इक्वल्स एमसी स्क्वायर का हाँ, तो वो गलत है क्योंकि इक्वल्स एमसी स्क्वायर क्या बता रहा है हम लोग एक बहुत ही स्पेसिफिक केस के बारे एक रेस्ट मोशन के बारे हाँ, में हाँ, बात कर हाँ, रहे हैं जो या पर्टिकुलर रेस्ट मास के बारे में बात कर रहा है राइट तो हम्म, उस वो चीज नहीं है ना अगर हम लोगों को जानना है एक बढ़िया तरीके से तो हमको एक पूरा कंप्लीट इक्वेशन लेनी पड़ेगी एंड देन उस करेक्ट, पर फिर एम इक्वल जीरो रखेंगे देन वी रियलाइज कि नहीं भैया ऐसा सीन नहीं हो रहा है पॉसिबल ही तो नहीं है वो। हाँ, तो मतलब जस्ट तो वांटेड टू हाँ, गेट दिस ताकि क्वेश्चंस आए तो उनको आंसर करते रहे क्योंकि मैं ऑलरेडी 5-6 मिस कर चुका था। हाँ, ओके, ये यस ऑलरेडी जो इक्वेशन ये लोग यूज कर रहे हैं ना, स्पेशली जब हम कुछ कुछ जो डिबंक करता हूँ मैं जैसे सूडो साइंटिफिक कंटेंट, उसमें ये बहुत ही फ्रैगमेंट ऑफ द एंटायर इक्वेशन का यूज किया जाता है, E is equals to mc square। दे डोंट रियलाइज इट्स अ पर्टिकुलर केस। ऐसा नहीं कि इट्स अ स्टैंडर्ड थिंग। तो उसमें आप m इज इक्वल टू 0 डाल दो तो पूरा सेंस ही चला जाएगा उस स्टेटमेंट का या उस इक्वेशन का। तो इट मेक्स नो सेंस। नो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट नथिंगनेस। ओके भार्गव Yeah, yeah. अबाउट योर So, expanding on what you said earlier about the proposition, so उसमें थोड़ा हम structure लाते हैं. The reason why that sentence is so huge is because उसमें तीन types के realism है. So the first question is, उसमें ही है, it is a subset of that. Do you believe that science investigates a mind-independent world, a world that is out there? So that is called metaphysical realism, which is a part of the same proposition. So that's one kind of realism. The second is, do you believe scientific claims provide true descriptions of the observable and unobservable aspects? So, which means they constitute knowledge. So, उसमें आता है epistemological realism. Epistemology is the study of knowledge. कि हम knowledge करेक्ट। प्राप्त कैसे करते हैं. So, that's the second aspect in that same sentence. और तीसरा जो aspect है कि scientific statements को literally लेना चाहिए या नहीं. So, that's the third aspect, which is semantic realism. सो इन तीनों पर अगर आप विश्वास रखते हो, you believe that scientific statement should be taken literally, you believe that science investigates a mind independent world, and you believe that it provides knowledge about observable and unobservable aspects of the world. So अगर आप तीनों propositions को yes बोल दोगे, then you are a scientific realist. And as opposed to actually what you said, majority of the philosophers of science are scientific realists. They believe that science establishes true or approximately true descriptions of the world. So that's scientific realism. अभी इसमें से अगर आप एक भी proposition reject कर दोगे, let's say you believe that no, science does not investigate a mind independent world, then then you are rejecting metaphysical realism. So you are an idealist. You believe that everything is a construct that our mind creates. Mind creates reality. Mind weaves reality into existence. So that's idealism. अगर आप semantic realism को reject करते हो, basically you believe that scientific statements should not be taken literally. Then you are an instrumentalist. You believe that science and its theories are simply instruments. They should not be taken literally at the face value. और अगर आप राइट। तीसरे को रिजेक्ट करते हो, which is what I do, by the way, I accept metaphysical realism. As a matter of fact, I accept literal realism, semantic realism, but I reject epistemological realism. इसका मतलब ये है कि मैं ये नहीं मानता कि science provides true descriptions or constitutes knowledge about observable and unobservable. So this is the particular thing that I reject. Other than that, I'm actually on the side. Most of the times I speak in favor of scientific realism, but when it concerns unobservable, in that case, I'm an anti-realist. So मेरा जो position है उसको कहते हैं constructive empiricism. So basically, अच्छा yeah, go यस on. लाइक इस चीज ये दैट वाज अ गुड एक्सप्लेनेशन अब होता ही है कि व्हेन वी टॉक टू मच अबाउट आईएसएम वर्ड्स ना फिलोसफी इज ऑल अबाउट आईएसएम मतलब हर आइडियाज Yeah, के लिए हो जाता है एंड समटाइम्स इट बिकम्स टू ओवरवेलमिंग राइट yeah, तो मैं इसको एक फर्दर वे में थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना चाहूंगा एंड देन आई आस्क यू कि yeah, जैसे कि साइंस के हम लोग रियलिज्म एंटी रियलिज्म इन सब के ऊपर बात कर रहे हैं लेट्स से समवन आस्क कि यार जब मैं कोई प्रोजेक्टाइल मोशन फेंकता हूँ ठीक है तो मैं उसको मैथमेटिकली अच्छे से कैलकुलेट कर लेता हूँ और मैं अच्छे से सर्टेनली जान लेता हूँ या लेट्स से वट एवर यू आर डूइंग लाइक इन योर पीएचडी प्रोजेक्ट ठीक है mhm, उसमें उस रिसर्च वर्क में वट एवर यू आर डूइंग यू कैन लाइक
test that and you can see कि ये काम कर रहा है. So exactly what we talk when we talk about realism, तो ये कौन से realism के बारे में बात हो रहा है? क्योंकि एक छोटा aspect of reality हम लोग तो ऐसे देख पा रहे हैं. तो what's that? Yes, correct. So what you are framing is a part of metaphysical realism and semantic, but it deals with observable. So basically, as you gave the example of projectile motion. So when you throw a ball with a certain velocity at a certain launch angle, और range और height तुमने पहले से calculate कर दी, velocity उसी velocity से फेंका और वहां जाके गिरता है. So this is an observable phenomenon. I can observe this, I can test it, I can repeat it. So anytime science comes close to talking about observable phenomena, we should be realists. And the mind is not responsible for constructing that velocity या फिर the reality environment जिसमें मैं फेंक रहा हूँ. It's not like my mind is weaving that into existence. So I would be metaphysical realist in that case. मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, science investigates things that are mind independent out there, not just in here. So I'm not a mentalist, I'm not an idealist. So that's about metaphysical realism. So, but the only problem that I have with scientific realism is the third aspect, which is epistemological. So इसका मतलब मेरा ये है कि scientific realist ये मानता है कि science का aim है to provide true theories or true descriptions of reality. So scientific theories are true, and the acceptance of a scientific theory entails the belief that it is true. So ये मैं reject करता हूं. मैं क्या कहता हूं as a constructive empiricist? That science does not aim at providing truth. Science aims at providing empirical adequacy. और इस term को मैं define करूंगा ही. But that is what my position is. Science aims at providing empirical adequacy. And the acceptance of a scientific theory entails belief that the theory is empirically adequate. तो अभी वही मैं आसान शब्दों में बताता हूँ. So science provides evidence or information that is adequate to call it. Empirical adequate. Yes. So that is correct. That is what I'm Correct. saying. Yeah. Yes, correct. So empirically adequacy का मतलब ये है कि it saves the phenomena. So for example, whatever it says about observable phenomena, if that is true, then the theory is empirically adequate. Observable, यहाँ पर observable बहुत important है, because जो मैं next point बोलने वाला हूँ, it's probable that many of the people, including both of you, might revolt. So for example, video बना दूंगा आपके बारे में. Okay, yeah. So the next thing that I'm going to say is, in that case, electrons, quarks, dark web nahi, dark energy, dark matter, all of these are unobservables. They are not observable phenomena. On top of it, evolution via natural selection. This phenomena itself is not observable. It's an unobservable aspect. उसमें से हम जो ऑब्जर्व करते हैं वहां से हम इन्फरेंस निकालते हैं कि हाँ ठीक है, इस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे जो थियरी चाहिए, दिस थियरी एडिक्वेटली एक्सप्लेन्स इट. सो इन दैट केस, रोकने के लिए बीच में रिक्वेस्ट कर रहा है कोई कि अगर आप इसको हिंदी में रख पाए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ऑडियंस हैं जिनको शायद एकदम प्रॉपर वो वर्ड्स में थोड़ा दिक्कत आएगी. ओके या श्योर या. सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऑब्जर्वेबल फेनोमेना हमें दिखता है, मैं उसका अध्ययन करता हूँ, मैं उसकी तरफ देखता हूँ, आई ऑब्जर्व इट, आई रिकॉर्ड इट. नाउ टू एक्सप्लेन दिस फेनोमेना, मैं थियरीज क्रिएट करता हूँ, और इस थियरी के कंस्ट्रक्शन में कई बार वी हैव टू पोस्टुलेट अनऑब्जर्वेबल एंटिटीज. रदरफोर्ड का एग्जांपल ले लो फॉर एग्जांपल, या फिर टेक एग्जांपल ऑफ जॉन डाल्टन, एनी एग्जांपल दैट टॉक्स अबाउट इलेक्ट्रॉन्स. So what we see is scattering of alpha particles, or what Thomson observed is basically deflection on his electrostatic meter, electromotive force की वजह से. So ये एक observable aspect है, and from that he inferred कि electrons exist करते हैं and they have a negative charge, and then Millikan performed his experiment. But इसमें हम जो एक postulation दे रहे हैं कि there is something called an electron that exists, which is real, but it's not observable. So that is something that I would maintain an agnostic attitude towards. So basically, I'm agnostic towards the existence of electrons as dictated by the atomic model. But if the existence of electrons explains the observable phenomena, जैसा कि scattering of alpha particles, या फिर Millikan's experiment, या फिर Thomson's experiment, अगर ये phenomena explain कर पाती है वो theory जिसमें unobservable entities भी है, then I have good reason to accept that theory, because it is empirically adequate. I don't need to believe in the existence of electrons to accept the theory as empirically adequate.
So the bottom line is I'm agnostic towards the existence of quarks or electrons, subatomic particles, dark matter, dark energy stuff, etc. But yeah, बहुत बड़बड़ कर रही. If you have feedback, you can So, provide. so in that domain, there are also things that are unobservable. For example, the ultimate reality that people talk about, or for that matter, God, or for that matter, a unicorn, for example. Yeah. You can't observe it, you can't scientifically prove it, empirically, you can't provide any evidence. Will that fall in the same bracket as you mentioned, electron quarks? Because for electrons and quarks and dark matter and dark energy, we have observable effects that we study in Yes. science. And for those effects, we have empirical evidence. We are not claiming to have empirical evidence for dark matter itself. We are talking about when we talking about science or scientific experiments or studies, we are talking about the empirical evidence for the effects that we observe for the things Correct. that we are talking about. Not exactly we are claiming कि electrons exist. Electrons के Perfect. effects हमने देखे. So when you say you are agnostic about these things, will the things that I have mentioned will also fall on that bracket, or you will need the empirical evidence for their effects as well to conclude कि यार ये Um, exist करता है कि नहीं exist करता. right. Yeah. So I'll explain more because the moment you bring in unicorns and God and things that are not natural, they cannot be quantified under naturalism. इसलिए I secluded the concept of God पहले ही. That's because when you bring God into the equation, it's a metaphysical construct. So it will dive deeper into metaphysics. Now, electrons are very much physical. They are described by physical and a Yeah, I property. would like to interrupt. When we say dark matter for that matter, जब उसकी Mm. discovery हुई, so when we say it is natural, what do we mean by कि वो natural है? So naturalism basically entails ऐसा कोई explanation which is not divine or which is not metaphysical, something that can be grounded in observation, something that can be grounded in experiment. Basically, pretty much everything that scientific method follows, we can call that natural explanation of things and supernatural explanation of things. So this is what might help us to understand. So क्योंकि so before dark matter was discovered, जो ये था mystery कि there is some hidden mass that is affecting gravity or the effects of gravity. So that position वो natural था कि supernatural था? No, that is still Only that that is still position. naturalism. Yeah, that is still, as a matter of fact, that would be ontological naturalism. इसका मतलब ये है कि missing mass is not missing mass के कारण के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है. अगर आप ये मानते हो, then you are a naturalist. अगर आप ये मानते हो कि somehow the missing mass can be attributed to the existence of God, then you are making a supernatural claim. You are adding something to the ontology. You are adding something to the nature. So that makes it non-naturalist or supernatural, whatever. That is Okay, not natural. cool. Yeah. Hmm. So if you want, ठीक. Kshitij, can you maybe share the notes? Maybe that Sure. can help us. Yeah. Yes, perfect. So इसमें अगर आप naturalism में देखोगे तो उसमें दो प्रकार है. We have ontological and methodological. So ontological naturalists are kind of stronger naturalists because they believe that reality deep down is also just natural. Anything that can be explained naturally. Mind ले लो या फिर abstract objects ले लो. Everything can be ultimately reduced to physicalism. And they would be called ontological naturalists. So by nature itself, they would be naturalists. But उसके लिए भी we have counter arguments, जैसे कि evolutionary argument against naturalism, moral facts, mathematical facts. So I'm not an ontological naturalist. I'm a methodological naturalist, which means I can keep separate the realm of metaphysics. I can keep separate the realm of ethics. I can apply the scientific method, but I would not apply science everywhere. Like for example, in morals, ethics, basically, or I will not apply it in mathematical facts. It's not So even the role of science when it comes to morals or ethics. It's not even right, हाँ when we जैसे हमने डिस्कस किया था डीएम में भी कि is murder wrong, इसको scientifically prove करो, तो scientifically वो prove नहीं करेगा. Science will only inform the proposition. It will not dictate the proposition कि murder is wrong. correct. Yeah, When हाँ, so but right. Bhargav, we have a question anyway, for you. कि Okay. some natural things are not observable, but they can be detected by certain methods. I So, don't know whether so it is a question or क्या है. Yes. yeah. So I think it's a comment where the person is talking about the distinction between observable and unobservable. So I think he means to say that unobservable things can also be somehow detected.
So I think he's confusing observability with simply seeing things. That's not what I Uh-huh. mean. I mean things that are unobservable in the sense, for example, evolution via natural selection. We don't observe the evolution of humans. It is a million-year-old process. We don't observe dark matter, electrons directly. We don't observe quarks directly. What we observe is the एम्पिरिकल एडिक्वेसी की ऑब्जर्वेबल फेनोमेना को एक्सप्लेन करती है, और वो हमारी जो थियरी है उसमें कुछ अनऑब्जर्वेबल एंटिटीज है. That is fine. You can accept the theory as long as it explains empirical phenomena or observable phenomena. So that is what my position is. इस पर भी there are counter positions, but basically that is what constructive empiricism says, that scientific theories do not aim for the truth, they aim for empirical adequacy. And the acceptance of a scientific theory does not entail belief in the unobservable entities or belief in the scientific theory as true. It only entails कि वो empirically adequate है. So I don't need to believe in the existence of electrons, but I can still accept the theory because that theory somehow explains the phenomena. It saves the phenomena. तो इसके नीचे मैंने एक image भी दिया है. नेक्स्ट इसी करता हूँ. yeah, next page पे. Yes, so yeah, look at this. So basically what this image shows कि हमारे पास let's say एक theory है, उसमें unobservable entities है, और उस theory के अलग अलग models है, और उस models के कई substructures होंगे, empirical substructures, maybe some you can call them sub models if you want. So as long as ये जो empirical substructures है appearances के साथ isomorph होते हैं, मतलब appearances को they can explain कि हाँ ये ऐसे क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, या फिर prediction कर पाते हैं. So in that case these empirical substructures are something that we can believe in. So as long as the appearances can be embedded into the empirical substructures of a theory, वो theory accept हो जाएगी, even though it talks about unobservable entities that I don't need to believe in. So I don't need to believe in the existence of quarks. I don't need to believe in the existence of subatomic particles. As long as the standard model can explain the observable phenomena. So I'm not attached to the model. I'm attached to what it explains concerning the observable world. So इसमें काफी सारे Exactly. unobservable entities भी हो जाएंगे, but I'm agnostic to their existence. I'm not sure if they actually exist or not. Yeah, exactly. Like I would Yeah. definitely very much agree on that, because अगर हम लोग साइंस पे भी देखें तो Mhm. जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल if someone is working on dark matter, then there would be someone who would might be working on MOND, let's say. ठीक है, Yeah. मॉडिफाइड ग्रेविटी पे काम, या फिर कुछ किसी और चीज पे काम कर रहा होगा, राइट? Mhm. क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट यू सेड कि एम्पेरिकल एडिक्वेसी Mhm. उसी के ऊपर ही पूरा वर्क चल रहा है. That is very much correct. But the point here is, and Rajkumar, I want you to add further on this, कि अब होता ये है कि these scientists who are working on these fields, उनको कोई आंसर चाहिए होता है. They are always trying to find the explanation. उस Mhm. explanation को find करने के लिए they try to form a model, जिस मॉडल की मदद से वो उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं. तो लेट्स अभी डार्क मैटर का एक बात कर लेते हैं कि ये जो इतने हाई ग्रेविटी आ रही कहाँ से आ रहा है, तो डार्क मैटर एक पॉसिबल वो था, राइट? तो व्हाट यू थिंक कि ऐसे तो हम लोग फिर हर चीज के लिए ही हम लोग एग्नोस्टिक हो सकते हैं, लेकिन एक रियल प्रोग्रेस करने के लिए हम लोगों को एक पर्टिकुलर मॉडल को बार बार तो वेरीफाई करते रहना ही पड़ेगा ना, कि इसके अब चांसेस ज्यादा है, इसके चांसेस ज्यादा है. सो उस हिसाब से व्हाट्स योर टेक कि आगे मतलब उसको हम लोग को कैसा ले जाना चाहिए, मतलब ऑन योर, लाइक इफ यू वांट टू ऐड फर्दर ऑन दिस. Correct. So होता क्या है, when we talk about dark matter for that matter, dark matter, we can, the name itself is a placeholder. हमें when we talk about, we know dark matter or study, we can study its effect. There is very limited scope. हमें तो possible candidates भी नहीं पता है पूरी तरीके से कि what are the possible candidates for dark matter. So dark matter is a placeholder. Secondly, कॉन्स्टेंटली उसके, जैसे क्षितिज ने कहा, इफ रिसर्च चल रहा है, स्टडीज चल रहे हैं, एंड कॉन्स्टेंटली वी आर बिल्डिंग अपॉन द न्यू इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग, या जो भी डिस्कवरीज हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उसके वी आर बिल्डिंग आवर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑन इट. इसमें इफ even if we can study its effects, even if we can study the observable aspects of it, not the unobservable aspect, it's as you rightly said, Bhargav, it's adequate for us to build a model. But eventually, what's the purpose of this? Where are we reaching? If we are agnostic about the very principle कि ये
ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता. So how is that helping the entire model, that position? No. So agnostic is not. So when I say electrons exist, when I say I'm agnostic to this, I'm not saying electrons do not exist. I'm saying that. No, I'm saying the not- possibility that electrons might not exist. चलो मान Right. लेते हैं. How is that affecting the model itself? Right. So how it affects the model is, let's say आपको बाद में कोई और एक observation मिल जाता है, observable phenomena that somehow challenges the existence of one of the unobservable entities जो आपके थियरी में थे, जो आपने postulate किए थे, to explain the phenomena. अभी बाद में और एक आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है which challenges कि भाई ये तो मैंने ऑब्जर्वेबल अनऑब्जर्वेबल अज्यूम किया था, बट दिस ऑब्जर्वेशन इज नाउ चैलेंजिंग द वेरी एग्जिस्टेंस. सो आपको पूरे मॉडल को रिफ्रेम करना पड़ता है. Can you give me some example for that? Yes. So for example, एक बहुत ही famous example लेता हूँ from my field, which is who was that guy? Entropy वाला? No, Carnot. Sadi Carnot. So Carnot engine is something that we learn as an ideal case scenario. So Sadi Carnot is considered to be one of the founders of thermodynamics. So उनकी एक theory थी called as caloric. So what he believed is heat जो है ना, so he believed that heat is more like a fluid which flows from a hot object to a cold object. He couldn't see the heat, but he could observe the phenomena कि ये hot body cold होते जाती है और cold body थोड़ी hot होते जाती है, provided they are in a closed environment. So they achieve equilibrium. So he believed that there is some fluid. Heat is a fluid which flows from hot to cold, and he called this fluid caloric. He couldn't observe it, so this was a part of his unobservable entity in his theory, and he used this unobservable entity to explain the phenomena of heat transfer. कि कैसे heat transfer हो रही है. And later on, it was understood कि caloric जैसा कुछ नहीं होता. So the very unobservable entity which he postulated to be the basis for his explanation, that itself was later falsified. But this unobservable entity helped him to explain heat transfer. क्योंकि बाद में उसने जो पूरे कार्नो इंजन की concept तैयार की, it was based on the concept of caloric. और उस पर recently मैंने कुछ paper भी पढ़े. It was also discussed in one of our thermodynamics class. So this is what I mean by unobservable and observable. As long as your unobservable entity can provide an explanation towards something observable, we can accept that theory. But we don't need to believe in the existence of unobservables that the theory postulates. So we should be agnostic towards anything that's unobservable, while believing in everything that the theory postulates about observables. So unobservables की तरफ agnostic, but observable phenomena explain कर दिया, then the theory should be accepted, and the theory is empirically adequate. So that is what By constructive the way, empiricism I is. think there's a misconception कि no one is saying कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता है. हियर ऐसा कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट हम लोगों ने देखा है, और Yeah. इलेक्ट्रॉन का जो मॉडल है दैट इज मतलब वो एक अच्छा मॉडल है, बट देयर माइट बी अ चांस कि वो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ना हो. ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ और ही हो. ऑब्जेक्ट को नहीं देखा, तो इस मिसकंसेप्शन को मैं क्लियर करना चाह रहा था, इसलिए आई टुक दिस. बाय द वे, Right. हम लोग सेकंड जो हमारा था पॉइंट, उसके भी हम लोग टाइम लिमिट क्रॉस कर चुके हैं. सो Okay. लेट्स मूव थर्ड पार्ट व्हिच इज व्हाट इज एविडेंस. बाय द वे, बहुत सारे ऑडियंस बार-बार बीच में बोल रहे हैं कि इट्स मोर लाइक अ डिस्कशन, इट्स डिबेट. तो भाई मतलब फाइट नहीं चल रही है ना, वो टीवी न्यूज़ वाला मसाला तो ऐसा नहीं मिलेगा यहाँ पर. आईआईटी बाबा बन जाऊं मैं, चाय लेके आओ यार. तो लड़ाई झगड़ा तो नहीं चलेगा यहाँ पर. मतलब अगर दोनों लोग एग्री कर रहे हैं, एक दूसरे के पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं, तो दैट्स अ गुड थिंग ना. अल्टीमेटली यही तो मोटिव है कि नॉलेज जो है, नॉलेज ज्यादा हो, एक दूसरे से अच्छे से हेल्थी वे में एक्सचेंज कर पाए. वो मसाला Yeah. वाली चीज नहीं हो पाएगी. सो एनीवे, मतलब मैं ये इसमें फिर भार्गव को पूरा वो बताना पड़ेगा, द टाइप्स ऑफ डिबेट्स जो ये लोग डिबेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट व्हाट वी आर टॉकिंग फॉर. तो वो मुझे मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करना चाहिए कि यार ये मिर्च मसाला वाला डिबेट अगर वो सुनने आए हो तो दिस इज द रॉन्ग प्लेस. Right. Yeah. Basically, Vad, Jalpa, Vitanda. So, Vad and Jalpa is something that I have a preference for. Vitanda is basically वो जो मिर्च मसाला वाले न्यूज़ चैनल पे दिखाते हैं. That is Vitanda. I'm interested in more in Jalpa and Vada because Indian intelligentsia needs to go towards Jalpa and Vada now. क्योंकि डिस्कशन ये होने चाहिए जो बाहर के वेस्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, इंडिया में नहीं होते अभी तक. So we need to bring that tradition to India. So yeah. Right.
अब हम लोग हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में बात करें, और बाय द वे डिबेट वाले पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि हमारा फोर्थ पॉइंट है डू वी ऑट टू बी साइंटिफिक और साइंटिफिक टेम्परामेंट। इसके ऊपर मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा होगा जो थोड़ा लेस टेक्निकल जाएगा और या ज़्यादा उसके ऊपर ऑडियंस भी इंगेज कर पाएगी। बट उससे पहले एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको कवर करना है, विच इज़ व्हाट इज़ एविडेंस। बिकॉज एविडेंस एक ऐसी चीज़ है जो डेली बेसिस पे हम लोग यूज़ करते रहते हैं कि मेरे पास इस चीज़ का एविडेंस है, ये है। बट हम लोग एविडेंस से समझते क्या एग्जैक्टली, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले भार्गव, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय एविडेंस। so basically evidence के भी if you can share प्रकार the है। yeah if you can share the notes on screen, that would be helpful. Yeah. So basically evidence explain करने के लिए let me give you 2 examples. तो ये तो एक scientific example ही है आपको जो screen पे दिख रहा है. So that was the apparatus that was created by Heinrich Hertz. और कैथोड रेस के नेचर के बारे में फिजिक्स कम्युनिटी में बहुत डिबेट चल रही थी. व्हाट इज द नेचर ऑफ कैथोड रेस? आर दे लाइट और आर दे वेव, पार्टिकल्स और वेव्स? ऐसी डिबेट चल रही थी. So Hertz created an apparatus and Hertz was in the favor of calling cathode rays as electrically neutral. They are not particles, they are electrically neutral. So Hertz created an apparatus which you're looking on the screen right now. और Hertz को 2 propositions explore करने थे. हर्ट्स को ये पता करना था कि अरे भाई अगर कैथोड रेस पार्टिकल्स होंगे तो दे विल बी अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड दे विल लीड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. दोनों होने चाहिए. सो ही क्रिएटेड दिस apparatus और इट्स बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फॉस्फोरेसेंस जो कैथोड रेस के फॉर्म में दिखते हैं. तो ही पास्ड द कैथोड रेस थ्रू दैट एंटायर ट्यूब जो आपको बीच में दिख रही है. और उसका ये मानना था कि अगर कैथोड रेज आर अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो इलेक्ट्रोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए. तभी जाके हम कह सकते हैं कि दे आर अफेक्टेड और दे कॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. पर हर्ट्स को तो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा. So from this he concluded that okay, since there was no deflection in the electrometer, cathode rays are electrically neutral, so they cannot be charged particles. तो ये हाइनरिक हर्ट्ज ने 1883 में प्रपोज किया था. 1883 करेक्ट. पर बाद में क्या हुआ 1897 में, जो अगला पिक्चर है नोट्स पे. सो इफ यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन. यस करेक्ट. या सो 1897 में थॉमसन बंदा आया who is actually considered to be the discoverer of electrons. So Thomson used the same experiment, but इसमें फर्क ये था कि हर्ट्ज के apparatus में the pressure was like 0.001 mm of mercury. तो इससे भी लो प्रेशर थॉमसन could generate in his apparatus, और जब इन्होंने ये किया तब डिफ्लेक्शन दिखाई दिया. So in that case, we have two contrasting hypotheses that cathode rays are electrically neutral and cathode rays are electrically not neutral. एक थॉमसन का है और एक हर्ट्ज का है. बट अभी इसमें से एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट बाहर निकलती है कि एविडेंस किसको माने. So basically that can be divided into 4 types. So first one is called epistemic. So बहुत से लोगों को, even the people on you know online platforms and popular circles में, इनको लगता है कि एविडेंस का मतलब what evidence is something ultimate, evidence is proof. Evidence is not proof. Evidence simply makes the hypothesis more likely. पर ये किस पर निर्भर करता है? So basically the first thing is epistemic. Epistemic ये कहता है कि E, which we can call the states of affairs, is evidence for some hypothesis, let's call it H, relative to one epistemic situation but not to the other. तो इसी एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं. 1883 में जब हर्ट्ज ने उसका एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया एंड उसमें कोई एरर नहीं था, सो बेस्ड ऑन व्हाट ही कुड नो इन 1883 एंड व्हाट ही डिड नॉट नो इन 1883, जो उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आए, he was justified in believing that those experimental results are evidence for his hypothesis. तो ये उसके एपिस्टेमिक सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि 1883 में एपिस्टेमिक सिचुएशन क्या थी, लोगों को क्या क्या पता था, क्या क्या पता नहीं था. So that is called epistemic evidence. So it doesn't matter who is actually in that situation. This is objective. So ये पहला प्रकार है. दूसरा है subjective. तो इसका मतलब ये है कि 1883 से 1897 तक पूरी फिजिक्स कम्युनिटी भी मानती थी कि हाँ, हर्ट्ज's रिजल्ट्स आर कंक्लूसिव
and they prove that cathode rays are neutral, electrically neutral. ये एक subjective evidence हो गया. So basically, some group can believe that E is evidence for H, and the group believes that H, the hypothesis, is true, and the group believes that the reason for the hypothesis being true is that the evidence is true. So this would be called subjective evidence. कि एक particular community, there is a subject who believes that this is evidence. और तीसरा जो है potential और veridical, you can group them together, and science aims at veridical evidence. तो veridical evidence का मतलब ये है कि E is evidence for a hypothesis H if it gives a good reason to believe the hypothesis and the hypothesis is true. So ये जो 3 प्रकार के evidences है, इन्हें epistemic, subjective और veridical कहा जाता है. So when we say that a particular hypothesis has evidence, we need to clarify which type of evidence are we talking about. Usually in science, we talk about veridical because we want to prove that the hypothesis is true, and this evidence establishes that hypothesis. These states of affairs establish that hypothesis. Oops, sorry. और इसके लिए नीचे जो है दोनों, so those are formal definitions. So अगर आप देखोगे पहला statement, so what it says is the probability of the hypothesis H given E if it is greater than the probability of negation of H given the evidence E or given the states of affairs E, then E is evidence for the hypothesis. So this is basically what evidence means. Bottom line ये है मोटा मोटा कि जो भी states of affairs एक particular hypothesis के लिए chances बढ़ाते हैं, that is called evidence. As simple as that. Evidence does not mean proof. Evidence simply increases the likelihood of a hypothesis. और इसीलिए हमारे पास falsifiability की concept थी. So as I have noted down below, evidence only shows which models are more likely to be true, not necessarily true. Evidence can never establish the truth of the hypothesis. It can only prove that this hypothesis is much more likely, maybe 90% probability, 95% probability, 99% probability. It will never become a conclusive evidence in science because science has the problem of induction. इसलिए सब hypotheses are falsifiable. But yeah, basically, this is the theory behind the concept of evidence, which comes from Bayesian and logical foundations of probability. Yeah, but शायद मैंने बहुत I talked a lot, but if you have any feedback, yeah, you can provide. So with Rajkumar. every series of new, experiments, and we gather some kind of information. So evidence, what is evidence? Evidence is any piece of information that is, that is giving a good reason to believe in particular proposition or any idea. So with every new series of experiments, new, insights, the likelihood, basically the probability is increasing, right? So we can say it will never reach 100%, but my question is, do we really need 100% when everything that we have postulated, every model that we have built is working perfectly fine? That is my question. Correct. So this particular statement that you're advancing, that is called the no miracles argument, which is given in favor of scientific realism. कि basically science की utility इतनी है, look, all the airplanes that we have built are flying. So that talks about the no miracles. कि अगर science गलत होता, then the fact that all these things are working properly is actually a miracle. So that means science सही होगा. So that is an explanation, that is an argument given by scientific realists in favor. Science सही नहीं होगा, science इतना सही है कि हमारा काम चल जा रहा है. That is what I'm saying. Correct, yeah. But scientific realists ये कहेंगे, basically majority of philosophers of science are scientific realists. So they would say, no, the reason why the reason why these things work is not just because science is empirically adequate, जो हमने पहले discuss किया, but basically it's because science, what it postulates or what it claims in its theories is literally true. और उसके लिए भी बहुत अच्छे arguments है. Inference for the best possible explanation, IBE कहता है. So yeah, the argument that you're advancing is actually for scientific realism. And me as a constructive empiricist would deny that, because I would say, yeah, of course it's going to work. And our airplanes are going to work because they are based on empirical adequacy, not on the truth. So yeah, that's the point that arises from this concept of evidence. So in that approach, are we not reaching towards, reaching truth? Basically, we are on that path, are we not? Yeah, so if we gather more and more information that make the hypothesis likely,
तो हाइपोथेसिस की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और वो थ्रेशोल्ड से Yeah. आगे चला जाएगा. So basically anything, you don't even need to get 90%. Even if you have some states of affairs that make the hypothesis more than 50% likely, 50% से भी आगे चला गया, then you That is have a good reason to believe the hypothesis. So it's all about Hmm. what the subject believes. It's not about something objective जो अपने आप ही हो रहा है. So there is an object and there is a subject, and we are studying nature. We are a part of nature, but we are studying nature. So as long as उस states of affairs से इस hypothesis की likelihood बढ़ जाती है, and the moment it reaches 50% and beyond, it gives you a good reason to believe कि अगर आप इसमें विश्वास रखेंगे, then you are rational. So that's called a reasonable degree of belief. So yeah, but in the case where you have no compelling evidence, favor or against me. So basically अगर आपके पास ऐसा सिनेरियो आएगा जहां पर ये स्टेट्स ऑफ अफेयर्स ना ही इस हाइपोथेसिस को कंफर्म करती है और ना ही उसके निगेशन को कंफर्म करती है, in that case you should suspend judgment. So that's the point about agnosticism. और यही Perfect. indirectly and यही indirectly point we can also apply to metaphysics, because metaphysics का logical positivism का यही problem हुआ था. Logical positivists wanted to reduce everything to scientific terms. They wanted to get rid of metaphysics. कि भाई metaphysics नहीं चाहिए, बहुत बकवास है, religion से आ रहा है, नहीं चाहिए, निकाल दो. पर निकाले कैसे? So इसलिए they came up with a principle. So they wanted to get rid of metaphysics and wanted to restate, or all the observable stuff. They wanted to give importance to that. So they came up with a principle which is called verificationism. So they wanted to find out things which are grounded in observation, facts, separating facts from metaphysical nonsense. So the principle was all meaningful statements are verifiable. So ये उनका principle था. All meaningful statements are verifiable. So on this principle, उनका ये मानना था logical positivists का, that you can separate metaphysics from facts. Metaphysical nonsense को हम eliminate कर देंगे. The problem that happened is, since this is a principle which is itself abstract, it's not empirical, you can ask a question: is this principle itself verifiable? और उसके पास आंसर नहीं था, because if it is not verifiable, then it's not meaningful, and if it's not meaningful, then that's self-defeating. So in that particular principle, all meaningful statements or propositions are verifiable. Instead of verifiable, if I put testable, will that make any difference? No, so they would interpret testable as verifiable, because logical positivists, the word positivists means it's grounded in some form of empiricism or some form of observation. Even And if we are not testing it or verifying it through empirical evidences or methods, will that still satisfy the purpose of verifying or testing it? So not technically, क्योंकि verify और test करने के लिए we use empiricism. We test theories based on empirical or empiricism basically. So the moment you include the word verifiable, testable, all of that would be the same thing. They are construals of the same thing. शायद By कुछ the way, question आएगा there's इसको. this good question. Yeah. Given certain observation probably confirm the hypothesis, electrons exist, then shouldn't you be more realist on a probability scale and not simply an agnostic? No, so basically, if there is a direct evidence of electrons, if there is a direct states of affairs that prove that electrons exist, then I have no reason to be an agnostic. But हमारे पास ये है कि हमारे पास evidence होता है observable phenomena का, और उसमें से हम infer करते हैं या फिर उसको explain करने के लिए unobservable entities बीच में लाते हैं. So I'm very much, I very much believe in scientific theories that talk about observable phenomena. I'm for it. I'm even a semantic realist in that case. But the moment you bring in something unobservable, I'm going to be an agnostic. I will accept the theory because it explains the phenomena, it saves the phenomena, but I'm not committed to believe in the existence of that unobservable. Electrons, quarks, dark matter, whatever be the case. Observable, So I'm all happy. if I come to you and I say something exists that is unobservable, how would you validate my statement? I would say, so basically this would be my standard response. If you say that something exists, but it's unobservable, I would say, I don't see any reason to believe that. It might exist, it might not exist. If you want me to believe that it exists, I'll need some justification. So can you provide an inferential or non-inferential justification for that?
So So again, yeah, good point. So I don't find a good reason to believe that. That is yeah. what a lot of atheists, I'm sorry to bring that point again, but it basically is connected here. That is what a lot of atheists and these people have been asking. When you present a point of view कि God exists and he is unobservable. So atheist का पहला response यही होता है, I don't find any good reason to believe in that proposition. So when we counter that, how would you counter that? So basically, What talking about is God, अगर मेरे हम लोग क्या हिंदी वाला ही पे ही रखते हैं बिकॉज़ 1-2 लोग फिर से बोल रहे हैं। सो इट्स ओके बेटर ओके वही या रहेगा। सो बेसिकली अगर कोई थीस्ट बंदा आता है मेरे पास और वह कहता है कि भगवान का अस्तित्व है, गॉड एग्जिस्ट्स, I would say I don't see any reason to believe that. Can you prove it? Can you provide some justification for me to believe it? उसी तरफ अगर एक एथिस्ट बंदा आता है और वो कहता है कि गॉड डज नॉट एक्सिस्ट, समथिंग एग्जिस्ट्स एंड समथिंग डज नॉट एक्सिस्ट, दे आर कॉन्ट्रडिक्टरीज. Hmm. Exactly one of them can be true. Both cannot be true simultaneously. God cannot both exist and not exist because Right. then it violates LNC. Hmm. We will not go into non-classical logic right now. LNC Hmm. violate हुआ. In that case, I have no reason to believe it. So इसमें से एक तो सच होगा. Either God exists or God does not exist. Whoever is making the claim God does not exist भी एक खुद का एक claim है, which many people don't understand. They don't grasp the idea कि God does not exist. ये भी एक claim ही है, जितना God exists ये एक claim है. तो दोनों अगर मेरे पास आएंगे, एथिस्ट बोलेगा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, थीइस्ट बोलेगा गॉड एक्सिस्ट्स, आई वुड बी like in the middle saying I don't see any reason to believe either of you. Can you provide justification? So that's the time when they will have to come up with arguments, at least arguments, inferential justification. Empirical evidence है या नहीं वो बहुत बात की बात है, but at least some form of argument which is deductive, that ओके can help me to justify it. Yeah. यस मैं यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ बिकॉज़ हम लोग टाइम लिमिट क्रॉस कर चुके हैं Okay, हमारा। okay. सो इट्स बेटर हम लोग हमारे सेकंड लास्ट पॉइंट पे आए और यहाँ से अब ओपिनियन स्टार्ट होगा। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है इट इज़ डू वी ऑट टू बी साइंटिफिक व्हिच इज़ जो हमारा टाइटल ही है प्रॉपर। तो सबसे पहले राजकुमार आपसे स्टार्ट करते हैं। Sure. So when I say we ought to be scientific, I do not mean कि हमें scientific या science practice करना है, जाके theories postulate करो, hypothesis postulate करो या experiments perform करो. That is not what I'm saying. I'm saying having a scientific approach, a scientific temperament as a mindset to things that is presented to you. एंड ये कोई चीज मैं अपने आप से नहीं ला रहा हूँ. दिस इज वेरी मच अबाइडिंग विथ एज सिंपल एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 51A(h) अगर हम बात कर रहे हैं तो वो खुद कह रहा है कि इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी टू हैव द साइंटिफिक टेम्परामेंट. दैट इज व्हाट आई एम प्रमोटिंग. आई एम नॉट प्रमोटिंग कि तुम सब लोग जाके साइंस परफॉर्म करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ. ऑल्सो व्हेन आई से वी ऑट टू बी साइंटिफिक, आई एम नॉट सेइंग कि वी ऑट टू बी ओनली साइंटिफिक या सिर्फ हमें साइंटिफिक अप्रोच हमें रखना है. देयर कैन बी डिफरेंट मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, बट फॉर मी आई थिंक, not just for me, I think basically कि scientific methods provides much more reliable knowledge than anything else that we have right now. If there are limitations or boundaries to science, there are limitations and boundaries to a lot of things. So that way, in that particular race, वैसे तो race होनी नहीं चाहिए, everything should complement each other, and that is exactly what I'm promoting. The different modes of inquiry should complement each other to reach the basically the truth. बट जस्ट इन केस आप एक इमेजिनरी रेस भी क्रिएट कर रहे हो कि वेर 35 मार्क्स के आगे जो जा रहा है वो पास हो रहा है, एंड यू आर समहाउ क्लेमिंग कि साइंस 35 मार्क्स के आगे नहीं जा रहा है, तो मैं पूछता हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा मेथड ऑफ इंक्वायरी है जो 35 मार्क्स के आगे जा रहा है, वो बताइए. नंबर 1. नंबर 2, आई थिंक उस पूरे रेस में 35 मार्क्स से सबसे क्लोज अगर कंपैरेटिवली कोई है, यानी सच से करीब कोई है, या अल्टीमेट रियलिटी या कुछ भी कह दो उसको, आप अल्टीमेट ट्रुथ कह दो उसको, उससे सबसे ज्यादा क्लोज कंपैरेटिवली, आई एम नॉट सेइंग हाउ मच क्लोज, बट कंपैरेटिवली साइंस इज क्लोजर. So scientific approach should be adopted, and because it provides the best and most reliable knowledge that we have right now, the best way to get reliable knowledge that we have right now. That is what I'm saying. Okay. Yeah. So basically, I have some issue over here because the reason why I use the word ought, even in model terms. मेरे को फिलोसफी वालों से ये डर लगता है, ये लोग एक एक वर्ड के बीच का जमीन आसमान का अंतर निकाल लेते हैं, एंड देन आई एम वेरी कॉशियस कि मैं कौन सा वर्ड यूज करूं. बट या प्लीज.
So basically the word ought as we understand it, जो हम even model logic में अगर हम ought का meaning देखें, so ought is interpreted as some kind of a necessity or obligation. For example, we ought not to commit murder. So that doesn't mean we cannot commit murder. It simply means we ought not to. So ought का मतलब deontic terms में होता है. Deontic मतलब anything that talks about moral obligations. So that's why I use the word ought over there deliberately. क्योंकि if something ought to be, then you have to follow it. Failing to follow that would be liable for punishment. So even the article that you are talking about from the Constitution, it is providing a recommendation rather than an obligation. Fundamental duties are recommendation; they are not obligation. For Mm-hmm. example, if you don't, Correct. yeah, exactly. So if you don't develop scientific temper, it's not like you're doing something unconstitutional which is liable for punishment, or it's an offense. But if you kill someone, that is definitely an offense which is liable, which should be punished. So इधर ought का फर्क आता है. So for example, let's say there is a school which is saying that evolution does not make sense. Evolution has no direct evidence, which for a constructive empiricist is the case. क्योंकि evolution via natural selection is in humans is not something we can observe directly. It's a million-year-old process since the past. So अगर कोई कहता है कि no, I don't see any reason to believe in evolution. Why should I teach my child that evolution is a truth? Because Or there are evidences for that. right. So आप डायरेक्ट evidences are ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट यू कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑन द टाइम स्केल. यू आल्सो हैव एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, 50 और प्रकार के एविडेंस है. यू कैन डेफिनेटली चेक दैट. ऐसा नहीं यू कैन डायरेक्टली अपोज दैट थियरी. ऐसा नहीं हो सकता. correct. यू कैन Yeah. आइदर So बी एग्नोस्टिक कि हाँ हमें हो सकता है देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ एवोल्यूशन दैट वी माइट नॉट नो, लाइक फॉर एग्जांपल द ओरिजिन ऑफ लाइफ. हमने एवोल्यूशन की बात कर ली है, पूरा सब अभी तक देख लिया, बट वी आर नॉट even evolution scientific way maybe we are not talking about the origin of life, so that we don't know, we are not sure about. But इसका ये मतलब नहीं कि पूरा evolution that we have right now it fails. right. So that's exactly the thing. I'm not saying evolution fails. The point here is हमारे पास evolution के लिए fossil records है, हमारे पास anatomical evidences. For example, the anatomy of us matches primates, other primates, they are our cousins. So which means there was a common ancestor. ये जो आपने inference निकाला anatomical similarities से. So this is an inference that is a posteriori. It's coming from something observable, but it's not a direct evidence. जैसे कि fossil record. Fossil record is observable because we see the fossils, and from that we infer that okay, we hypothesize a theory about it. Same is the case with, for example, if you test E. coli bacteria, we can observe micro evolution in that case, not macro, micro. So that applies to E. coli, but that does not necessarily, for any logician or any other aspect, mean that okay, अगर इसमें काम कर रहा है तो macro scale पे भी काम करेगा humans पे, और humans इसी तरह हुए हैं. So there is very good reason for someone to be an agnostic in this case. कि हाँ भाई ठीक है, empirical adequacy तो है evolution की, और evolution falsifiable भी है because it's scientific. So I would accept the theory. Rather, I would say evolution should be accepted as empirically adequate. It is accepted as empirically adequate. But that does not entail that I should believe that humans have actually evolved this way. ओके, It मैं is इसमें possible. कुछ Yeah. ऐड करना ये चाहूँगा कि ऑब्वियसली आई थिंक ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है एंड हर कोई एग्री कर रहा है कि जो भी अनऑब्जर्वेबल फिनोमिना है उसके लिए हम लोग एविडेंस देख रहे हैं और एविडेंस मतलब उसकी लाइक्लीहुड बढ़ा रहा है अगर हम लोग बार बार उसको वेरीफाई कर सके, लेकिन Right. अल्टीमेटली हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि ये चीज़ होती होती है. यस, Mhm. बट व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक एवोल्यूशन और ये सारी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली इट अप्लाइज टू दैट केस ऑल्सो. बट द थिंग हियर इज कि इतनी जब कंसिस्टेंसी आ जाती है, सो ऑब्वियसली हम लोग एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाते हैं, एंड while there is still a chance कि evolution से बेटर कोई मॉडल आ जाए जो सारी चीजों को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दे, सब कर दे, तो evolution गलत निकल गया. बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ चांस कि यूनिवर्स के किसी कोने में ग्रेविटी काम नहीं कर रही होगी किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के अराउंड, राइट? Mhm. लेकिन हम लोग जनरली विल नॉट यूज दैट बिकॉज मेरा जो मॉडल है वो इतना कंसिस्टेंटली वर्क कर रहा है, इतना कंसिस्टेंटली हर एक एविडेंस को जस्टिफाई कर दे रहा है, सब कर दे रहा है. सो इन दैट केस आई वुड से कि ये है भाई, मतलब इसको मैं इस तरह, क्योंकि अब उसमें एग्नोस्टिक हो जाना व्हाट वुड कॉज द प्रॉब्लम कि ये बोलते रहे कि हाँ ये हो सकता है, मतलब ये थोड़ा ऐसा टेम्परामेंट क्रिएट हो जा रहा है, साइंटिफिक टेम्परामेंट, जिसके ऊपर हम लोग बाद में Yeah. आएंगे ऊपर, राइट? तो हम लोग को ये प्रेमिस लेकर चलना है कि ये जो मेरा अनऑब्जर्वेबल फिनोमिना है, यस देयर इज अ
चांस कि ये गलत हो। जैसे ग्रेविटी को लेके ही बोला कि देयर इज अ चांस कि ये गलत हो, हालांकि वो फ्रॉम इंडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, लेकिन चांस मतलब उसकी लाइक्लीहुड कम है। इट्स आई वुड रादर मैं पुट माय बेट ऑन कि ये सही होगा। Right, yeah. But in that case, that would lead to a very famous argument called as evolutionary argument against naturalism, which directly affects all philosophy of science and science itself. So वो argument that was I've read about it. yeah, EEAN. इसमें problem क्या है? We are assuming that evolution only focuses on survival rather mhm, than truth, जो basic उसका premise है. right, right, I am saying truth is part of the mechanism that is promoting survival. Like for example, if I have a true belief कि यहाँ पे एक predator है और there is something for me that can help me in my survival वगैरह, ये true beliefs are part and parcel of that survival mechanism. It's not counterparts कि either we can focus on survival or we can focus on true beliefs. जो basic उसका premise यही है, if I'm not yeah, wrong. yeah. So basically, the problem is when you said true beliefs, that means knowledge, justified true belief. हाँ. Beliefs can be justifiable, but that does not make them necessarily true. जैसे कि आपने अभी एक जो example दिया, मुझे I believe that there is a predator over there. Now this belief would be justified if पहले मुझे कभी वहां predator दिखा था या फिर मुझे आवाज आ रही है. So there is some justification for my belief. Now if there is Right. actually a predator over there, then that is justified true belief. So JTB model satisfy ho gaya. Now you know there is a predator over there. So that's the distinction between belief and knowledge. Now what EAAN establishes is that was developed by Alvin Plantinga, that evolution or natural selection, basically it is shaped towards survival and reproduction, basically individual survival and reproduction. It's not necessarily shaped towards us recognizing truths or knowledge. So beliefs could be false, but जो भी हमारे sensory faculties evolve हुए हैं, they are to support our survival and reproduction rather than supporting our beliefs or providing knowledge about the world. So अगर आप evolutionary theory को accept करते हो and you accept naturalism along with it, then the reliability of our cognitive faculties becomes very low. So we cannot rely on our cognitive faculties for knowledge about the world. So naturalism and evolutionary theory both would be incompatible in that case. You cannot believe in both of them. You can either be a naturalist or you can be a person who believes in evolutionary theory. You cannot believe both of them simultaneously, because if you do that, तब हमारे sensory faculties की reliability बहुत low हो जाती है. And that will have damaging consequences on all of science, physics, biology, chemistry. So either way, it can defeat naturalism or it can defeat evolutionary theory. अभी evolutionary theory definitely has evidence that observable phenomena को explain करती है, even though it postulates unobservable things. So I would say evolution is empirically adequate. So I believe in the theory of evolution, but I'm not a naturalist. I don't think all things in the universe can be explained by natural. They cannot have naturalistic explanations. Some things are outside naturalism, जैसे कि morals या फिर mathematics. So in that case, जो लोग ये कहते हैं कि I'm a naturalist and I believe in evolutionary theory, they are making incompatible claims, and that raises a huge question mark. So Bhargav, अगर coming to the like जो हमारा title है, do we ought to be scientific, and you're Yeah, saying no. तो yeah, उसका I'm saying. main जो reason है वो है, एक बार can you explain? जो Yeah, main sure. reason है कि So when I say I don't believe that scientific methodology should be obligatory for everyone to follow, or scientific approach should be obligatory for everyone to follow. I would support science in observable things or prediction or engineering, for example. But for example, you cannot use science in moral claims. You cannot use science in mathematical claims. So we ought to be rational, but No, not that is necessarily. where I mentioned ना कि आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि only to ought to be only scientific. वहाँ पे you need कॉम्प्लीमेंट्री मोड ऑफ इंक्वायरी. वहां पे आप एथिक्स की बात कर लो, मोरालिटी की बात कर लो, लॉजिक की बात कर लो, मैथमेटिक्स की बात कर लो. दैट शुड गो हैंड इन हैंड. ऐसा नहीं आपको बोला जा रहा है कि सिर्फ आप हर चीज को साइंटिफिक नजरिए से देखें. जैसा यू राइटली पॉइंटेड आउट इन माय डीएम कि मर्डर इज रॉन्ग, इसको हम साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, बट साइंटिफिकली मैं उसको इन्फॉर्म जरूर कर सकता हूँ. पॉलिसी मेकिंग में साइंटिफिक अप्रोच को इंक्लूड कर सकता हूँ, उसको और समझने के लिए, एनालाइज करने के लिए मैं साइंटिफिक मेथड उसको
डिक्टेट करने के लिए मैं साइंटिफिक मेथड यूज नहीं कर सकता. दैट इज द लिमिटेशन ऑफ साइंस. बट एवरी मोड ऑफ इंक्वायरी हैज द लिमिटेशन. अगर आप कोई एक मोड ऑफ इंक्वायरी लेके बैठेंगे, चलो नॉट ऑट टू बी साइंस, चलो साइंस को छोड़ देते हैं, तेल लेने गया साइंस, कुछ और अपना लेते हैं. लेट्स टॉक अबाउट लॉजिक. देयर आर लिमिटेशंस टू लॉजिक, देयर आर लिमिटेशंस टू मैथमेटिक्स. सो हम एक मोड ऑफ इंक्वायरी से तो एनीवे कोई बोल ही नहीं रहा. ना मैं कह रहा हूँ, ना क्षितिज कह रहे हैं, ना आप एग्री करेंगे. यहाँ कहा जा रहा है कि साइंटिफिक मेथड्स प्रोवाइड्स अस the more reliable knowledge, number one. Number two, in that particular pursuit, we can use other modes of inquiry that can give us certain insights that science cannot. For example, ethics and morality. That is what we are saying. Right. Correct. So when you say we ought to be scientific, and ethics and morality are by definition non-scientific. So you cannot simultaneously ought to be scientific and simultaneously ought to be non-scientific. They are not, Um, non-scientific. We can say they are, for now, outside the domain of science. Yes, that would be Scientifically, non-scientific. no, It is not the case that they are non-scientific. scientific. If I can't inform it, if I can't explain it in certain way, then it would be non-scientific. If I have nothing to do with ethics and morality in terms of science, then it would be non-scientific. Yes, correct. So that's exactly the thing. Ethics, for example, if I say intuitionism. So intuitionism is not exactly a scientific theory about morals. It's a theory coming from ethics. और इंट्यूशनिस्ट्स का ये मानना होता है, एथिकल इंट्यूशनिस्ट्स, की मॉरल्स एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, बट वी कैन नॉट ऑब्जर्व देम, वी कैन ओनली नो देम इंट्यूटिवली. सो दे आर कॉल्ड एथिकल. यहाँ पर मोरालिटी और ये सारी चीजें जो, उन सब चीजों के ऊपर बात ही नहीं हो रही है. No, होनी चाहिए, because for example if we ought to be scientific, और साइंस में let's say gene editing आ गया, जहां पर I can change the structure of my child, blue eyes चाहिए, गोरी स्किन चाहिए, और लड़का ही चाहिए. If science enables us to do that one day, and if we ought to be scientific, then in that case we have to do what is scientific. The other example here are two things. Here are two things. For जैसे CRISPR टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं. Yes, there are things which we can do with the science. जैसा वो फेमस चाइना वाला केस हुआ था, where they did the CRISPR. But the thing कि science is telling us कि ये जो naturally जो physical चीजें हम लोग उसको कैसे वर्क कर रहे हैं. अब सही क्या है, गलत क्या है, वी कैन कॉल द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ऑफ दोस फील्ड, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं. व्हाई डू वी हैव टू नेसेसरीली पुट द साइंटिफिक मेथड टू टेस्ट वेदर इट इज एथिकली और मॉरली राइट और रॉन्ग. राइट, साइंस ने एक ऑब्जेक्टिव काम कर दिया है. अब जो दूसरा पार्टी है, हु डील्स विद द मोरालिटी, हु डील्स विद द एथिक्स, दे कम एंड देन दे कैन हैव डिस्कशन कि अब इसका क्या करना चाहिए, वेदर इज इट अ गुड प्रैक्टिस और नॉट. Right, so that's why when that's someone says ना कि to be ought to be scientific, it doesn't mean कि वो सारी चीजें भी, मतलब दुनिया की हर चीज ही साइंटिफिक तरीके से कर दी जाए. It simply means कि जो चीजें हम लोग का जो जैसे इंक्वायरी का जो एक अप्रोच है, जैसा कि राजकुमार ने बोला था, जिन चीजों को साइंटिफिक मेथड के थ्रू किया जा सकता है, because it is giving it has been successful, it has been so successful in the past 300-400 years. तो ये एक अच्छा तरीका है उस चीज को करने का. एंड it's a good likelihood कि इस टेम्परामेंट को अगर हम लोग फॉलो करवाते रहेंगे, so we might get a better result. Not necessarily, but it's very likely. Okay, yeah. So उसी पर अगर आप और एक पॉलिसी लोगे, for example, when we say we ought to be scientific, building on what you said, veganism in that sense is scientifically supported, and almost all the people on planet Earth who have actually studied about veganism, they would say कि हाँ भाई, veganism is better for the environment, it's better for health, and it's ethically. Ethics का point अगर negate भी कर दे, तब भी environmentally अच्छा है और health के लिए अच्छा है, and it is supported by science. So in that case, if we ought to be scientific, we need to create laws that are in accordance with this scientific principle, और हमें meat eating पर ban लाना चाहिए. If we ought to be scientific, because science is telling you this is wrong environmentally, it's causing pollution, it's causing emissions. No, more than that, that particular proposition has reliance on ethics more than science. I am vegan from since क्या कहते हैं 2022 I think, 4 साल हो जाएंगे अगले साल. तो मेरे लिए साइंस से ज्यादा मेरा एथिक्स इंपॉर्टेंट था वो डिसीजन के लिए. हाँ, तो मैंने पहले ये नहीं देखा, जब ये कब देखा मैंने ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट या बाकी सारी चीजें कब मैंने देखा, जब मेरे को काउंटर देना था, डिबेट करना था किसी से अबाउट वीगनिज्म. बट वो डिसीजन लेने के लिए मेरे को साइंटिफिक अप्रोच लेना नहीं पड़ा था. दैट वाज वेयर माय एथिक्स टुक ओवर. तो देयर आर सर्टेन, यहाँ पे ऐसा. हाँ,
या ऑल्सो रिगार्डिंग द पॉइंट कि यस, अगर हम लोग साइंटिफिक स्टडीज भी देखें तो वो बोलते हैं कि वीगनिज्म से लेस कार्बन फुटप्रिंट आता है, विच अल्टीमेटली लीड्स टू लेस क्लाइमेट चेंज, तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी ज्यादा बेटर होगा वीगनिज्म अगर समवन फॉलोज दैट। सो मैं व्हाट माय पॉइंट इज, मेरी हाँ फिर इंटरनेट सही है अभी? या हाँ, अभी आ अब रहा आ है। रही है। हाँ। ओके। सो व्हेन आई से डू वी और टू बी साइंटिफिक, इसमें आई थिंक हम लोग ये प्रेमिस डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे मैंने एक साइंटिफिक स्टडी की, जैसे अभी इसका ही एग्जांपल लिया था डीएनए का, कि यार वीगनिज्म को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो क्लाइमेट के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, इट्स बेटर फॉर आवर एनवायरनमेंट आल्सो, इट्स बेटर, और अलग अलग तरीके से और सारे प्रोटीन सोर्स मिल जा रहे हैं। तो अब वहां पर अब फिर एथिक्स और ये सारी चीजें आई, वहां से हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से वहां से हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इट्स बेटर, नो इट्स बेटर कि हम लोग वीगनिज्म को प्रमोट करें। हियर्स द थिंग, जैसा कि भार्गव ने बोला कि हम लोगों को लॉ में भी ये चीज प्रमोट करनी चाहिए, सो दैट गोज, फिर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अब सब कुछ इतना परफेक्ट तरीके से नहीं काम कर पा रहा है। जैसे मेरे हिसाब से तो जो ये फलित ज्योतिष है या एस्ट्रोलॉजी है, उसको भी लॉ में उसको उसके अगेंस्ट हो जानी चाहिए कोई चीजें, ठीक है, लेकिन हम्म। नहीं हो रही है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच शुड हैपन, बट वो नहीं हो रही है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर हम लोग प्योर एंड राइट। साइंटिफिक दैट जो हम इज लोग नॉट अ प्योरली रीजन, एंड चल रहे दैट हैं। इज नॉट अ रीजन, नहीं हो रही है वो चीज, दैट इज नॉट अ रीजन टू अंडरमाइन साइंस, दैट इज समथिंग दैट No, वुड no, no. आई वुड लाइक टू Exactly. ऐड। So, in what you said lies the answer. If you believe that when you say ought to be scientific, it means we are obligated to be scientific. So, agar we are obligated to be scientific, we should create laws against Falajotish. We should create laws against meat eating, and possibly we should also create laws against abortion. So, waha things starts getting sensitive, especially when you talk about abortion in India or even in the United States. क्योंकि United States में अभी इसी टॉपिक पर डिबेट चल रही है, where one is in favor of advocating everything that is pro scientific, whereas the other is in the favor of non scientific. So यही अगर आप इधर भी इंडिया में भी अप्लाई करोगे, so if you think there should be laws that ban Phala Jyotish, there should be laws that ban meat eating, and there should be laws that ban abortion. So would you agree to that or disagree to that? I think there should be discourse, there should be considerations. ऐसे we are not the subject matter expert of ethics, we are not subject matter expert of particular uh, domain of science. Science बहुत बड़ा है, we are Right, sub yeah. domain of science. Yeah. Yeah, but Phala So Jyotish is not science. So do you ought to, if you ought to be scientific, you would say, yeah, there should be laws against Phala Jyotish. But in that case, we also need to make laws against meat eating. So अभी जो भारत में चिकन लोग खाते हैं, they would be liable to punishment. And that would be treated under animal cruelty या फिर murder, rape, कुछ भी लगा सकते हैं charges. Because science supports, science is as solid in that a case. vegan, I would agree to that. But हाँ, okay. Mhm. Yeah. So in अभी that अभी case, लेट मी टेल यू व्हाट्स हैपनिंग, यहाँ पर तीनों का ही उस चीज को लेके सेम ओपिनियन होने वाला है, ठीक है, right. लेकिन Yeah, पब्लिकली ऐसे बोलना वो वाला सीन हो जाता है। exactly. और अगर मैं इसके फेवर, इफ आई एम इन द फेवर ऑफ बीइंग ऑट टू बी साइंटिफिक, देन इनडायरेक्टली आई एम सेइंग कि मेरे जो दोस्त है जो चिकन खाते हैं उनको जेल में जाना चाहिए, बिकॉज साइंस इज सॉलिड विद वीगनिज्म. साइंस प्रोवाइड्स एविडेंस कि भाई नहीं, मत खाओ, पोल्यूशन भी होता है, हेल्थ भी बर्बाद होती है. एथिक्स का तो अलग ही मैटर है, वो शायद उस एथिक्स को डिनाई कर दे, बिकॉज एथिक्स आर नॉट ग्राउंडेड इन ऑब्जर्वेशन. सो एथिकल में डिबेट्स हो सकते हैं, बट अगर साइंस सॉलिड है, देन यू ऑट टू फॉलो दैट. So if you ought to follow that, if you ought to be scientific, then we should create laws because it's a deontic claim. Ought is obligation. So we should create laws banning meat, we should create laws banning Phala Jyotish, and we should create laws banning abortion, or I don't know, not banning abortion. So either it creates a very sensitive issue. So in that case, I believe we ought to be rational, but not necessarily scientific. So तो that is what I'm advocating for. जैसे मैं खुद भी, क्योंकि ऑल्दो आई एम अ मॉडरेटर सो आई शुड नॉट बी सपोर्टिंग एनी ऑफ द पॉइंट, बट क्योंकि Mhm. आई थिंक आई शुड ऐड सम पॉइंट्स हियर। तो यहाँ पर मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि ऑट में हम लोग क्या कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या हम लोग प्रैक्टिकली कर पा रहे हैं वो चीज को, बिकॉज व्हेन वी ट्राई टू डू दैट प्रैक्टिकली देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। Mhm. फ्रॉम इन अ वेरी आइडियल वर्ड आई वुड से हो जाए, ठीक है, Mhm. कर दो, मीट ईटिंग को मनी बैन मन कर दो, हम तीनों यही कह रहे हैं, जो यही है। स्टेटमेंट्स हो रहे हैं मनी मन हम यही कह रहे हैं कि हो जाना चाहिए। प्रैक्टिकली वी आर नॉट एबल टू डू दैट, या Mhm. ठीक है, क्योंकि वी नो देयर आर वेरियस रीजंस व्हाई वी कांट डू दैट, उस वजह से नहीं कर पा रहे। बट डज इट मीन कि हम लोग कहते हैं वी आर नॉट ऑट टू बी साइंटिफिक? आई मीन Yeah, ये so तो basically, yeah, मैं ये क्यों कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट एनिमल क्रुएल्टी,
So we have established that animal cruelty galat hai. We have established murder is wrong, rape is wrong, and all other stuff are wrong. And then we have created laws on it. कि भाई ये law है, ये deontic है, ये obligatory है, ये मानना ही पड़ेगा. अगर हम इसमें scientific claims को add कर दे कि भाई any school that talks about Fuller Jyotish that ought to be banned and it is liable to punishment. Any school that any institution that promotes meat eating, उस पर सख्त पाबंदी लगानी चाहिए. And even the same goes with abortion. So in that case, if we ought to be scientific, we are causing sometimes ethical damage, जैसे कि in the case of abortion or in the case of meat eating, कि लोगों का अगर डिसीजन है खुद का पर्सनल चॉइस है कि नहीं मुझे खाना है चिकन, मुझे खाना है बीफ, मुझे खाना है पोर्क, but then you say well it's not scientific, so we ought to be scientific, so इस पर law है और you will go into jail under the charge of murder, second degree, first degree, whatever, manslaughter. So in that case, Again- if we ought to be scientific, we need to send those people to jail. अगेन इसमें सीन यही आ रहा है कि व्हेन वी आर सेइंग ऑट टू बी साइंटिफिक देन वी आर लीडिंग इट टू द लॉ सिंपली कि अगर वी Correct. ऑट टू बी साइंटिफिक That's why इसके अगेंस्ट deontic. हम लोग को यस Yeah, that's why I said it's a deontic claim. So the ought word is there because, for example, if some famous personality is talking about Fuller Jyotish, astrology, and teaching it to the kids, so I would say, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए उसको. But if I'm advocating that we ought to be scientific, then उस बंदे को जेल में जाना चाहिए. नहीं तो If you say we No, इस पूरे दोनों पोजीशन में when you be rational, ये नहीं करना चाहिए, but ये हो रहा है and कुछ नहीं कर सकते अभी. That Yeah. position and a position where I can do something because it's non-scientific, या we ought to be scientific. ये दोनों position में which is better? Which the one position which is better? the one which says we ought not to be scientific, क्योंकि उससे अगर if we support I think that is causing more harm than good. No, but it can eventually, अगर हमने obligation ला दिया कि जो भी science कहता है वो मानना ही चाहिए, it ought to be the case, it is obligatory, then then it would also lead to other things which will damage personal choice, free will, freedom of choice, freedom of expression, वो सब भी damage कर देंगे. So even if I present an idea which is non-scientific, I still have freedom to express that idea. But if you ought to be scientific, I cannot express that idea because that would result in me getting punished. क्योंकि मैं ऐसे कुछ बोल रहा हूँ जो लीगल नहीं है, बिकॉज नाउ साइंस हैज एंटर्ड द डियोंटिक रेल्म, कि अगर वो नॉन साइंटिफिक है मैं उसके बारे में बात भी नहीं कर सकता, मैं उसके बारे में बोल भी नहीं सकता, सिखा भी नहीं सकता, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट ऑन ट्विटर. सो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट विल स्टार्ट बिकमिंग हेजेमनिक, it will start becoming dominating, it will start affecting freedom of choice, freedom of expression. So इसलिए I think that is correct. That is a gray area. That is a gray area. But at the same time, अगर हम ये कह रहे हैं कि there is free will, there is freedom of choice, freedom of expression ये वगैरह, there is also the possibility that freedom, that free will is being abused. Yeah, what about that? The same gray area appears there as well. Right. So that is why I said we ought to be rational, but not necessarily scientific. So for example, rationality can support ethics. Agar koi banda, if some guy is eating non-vegetarian, so we can have an ethical debate with that person कि भाई ये मत कर because ये unethical है, and then we can rationally explain that to that person without taking into consideration scientific claims कि environmental veganism वगैरह सब कुछ है, mission है, उसको वो सब कुछ ना बता के भी we can have a rational discourse with that person कि भाई तू क्यों खाता है, इंसान को खाएगा नहीं खाएगा, क्यों नहीं खाएगा, इंसान भी टेस्टी हो सकते हैं, इंसान से भी प्रोटीन मिल सकता है, क्यों नहीं खाता. So this is a rational discourse. So we ought to be rational, but we don't ought to be scientific. We have an obligation to be rational, but we don't have an obligation to be scientific, because So science cannot be applied in ethical basically, things. you basically mean कि if we say we ought to be like rational, तो उसमें हम लोग साइंस को भी कवर कर ले रहे हैं और जहां पर एथिक्स की रिक्वायरमेंट है वहां Yeah. उसको भी कवर कर ले रहे हैं, और हम लोगों को Yes. देखना है कि इनका इंटरसेक्शन कहाँ लाई कर रहा है और किसको क्या डील करना है, और उस हिसाब से we take the action. Correct. Yeah. So basically, if science somehow is overpowering the freedom of expression, we should not aim for science only. So अगर हमारा ought to scientific होता, in that case science should dominate all other areas of inquiry. Freedom of expression भी dominate करना चाहिए. If what I'm expressing is non-scientific, then I should be punishable. So वो नहीं होना चाहिए. So in that case we not. Yeah. It's kind of the same thing that I started or rather I begin with. ये
कि मैं जब कह रहा हूँ ना कि सिर्फ साइंटिफिक मोड ऑफ इंक्वायरी हमें नहीं लेना चाहिए, बाकी मोड ऑफ इंक्वायरी भी लेना चाहिए। मैं जनरल टर्म्स में बोल रहा हूँ, भार्गव वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में कह रहे हैं कि वी ऑट टू बी रैशनल, तो उसमें सब आ गया, Yeah. साइंटिफिक आ गया, एथिकल आ गया, so it's Right. the same thing that we are Correct. talking Yeah. about. So basically, Yeah. but if you include scientific only, then नहीं, इसमें no से one is talking about scientific only. वो तो मैंने yeah, स्टार्टिंग में मैंने scientific अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में कह दिया कि वी ऑट टू बी साइंटिफिक, बट there are other things that we can include in that. It's not, I'm not right. saying, or we're not promoting ki you ought to be only scientific. Yeah, so yeah, उधर प्रॉब्लम थोड़ा ये रहा है कंस्ट्रक्शन का कि when you say ought, it raises an obligation. We ought not to commit murder, we ought not to steal. So these things cannot be violated because violating these things leads to punishment. Similarly, if we ought to be scientific, which means we ought not to be basically anything irrational or things like that, कि फलो ज्योतिष नहीं करना चाहिए, किया तो पनिशमेंट मिलेगा, लोगों को नहीं मारना चाहिए, किया तो पनिशमेंट मिलेगा। बट इसमें हो क्या रहा है, लेट्स से आई ट्राई टू एक्सप्रेस let's say some kind of an opinion which is not scientific, which is non-scientific, it goes against well established science. So in that case मेरा ये opinion express करना भी मुझे punishment दे सकता है। बेस्ट केस that's why I keep coming to the example of veganism, क्योंकि अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे चिकन खाना ही है, even though science says we should not eat that. So if science is considered to be a deontic thing, then me saying this that we ought to kill chicken, me saying this that we can eat chicken or eat pork basically, ये भी मुझे punishment में डाल सकता है, ये भी मुझे illegal कामों के लिए unnecessarily ban कर सकता है। So इसलिए we ought to be rational, not scientific, because not all scientific claims are going to be, basically you cannot transfer all the scientific claims to ethical claims as well, या फिर freedom of expression claims। तो अगर किसी बंदे को कहना है कि नहीं एस्ट्रोलॉजी होती ही है, और अगर आपका प्रिंसिपल अप्लाई हुआ कि नहीं भाई साइंस जो कहता है वही करना चाहिए, तो ये एस्ट्रोलॉजर बंदा जेल में जाएगा। सो डू यू थिंक दैट एस्ट्रोलॉजर बंदा शुड गो इन जेल? दैट्स द क्वेश्चन। सो इफ यू ऑट टू बी साइंटिफिक देन उसको जेल भेजना पड़ेगा। बट इफ यू नो you say that no, scientific claims should not be obligatory, scientific approach should not be obligatory, then in that case वो बंदा जेल में नहीं जाएगा, he आई can थिंक express। इस पॉइंट पे, और क्योंकि हमारा टाइम भी हो गया है, तो यही डिस्कशन जो आगे वाले पॉइंट पे अपने आप लीड yeah करने ही वाला है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इन इंडिया एंड व्हाई डू वी नीड साइंस कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये जो पहला वाला प्रोपोजिशन था, ये पूरा जो हमने अभी डिस्कस किया, ये सिर्फ एक वर्ड पे पूरा एंकर था, द Yeah. ought all a word. So that is where it makes structural difference. Apart Right. from that, we all agree कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, and we agree that there are certain topics, certain instances where certain things will take over science, जैसे ethical चीजें हों। So that is correct. वहाँ पे पूरा एंकर वो ought word पे था। That is Correct, what yeah, so I'm realizing. correct, yeah, obligation, and on top of it ये important क्यों हो जाता है? Basically if you talk about scientific temperament, so अगर ऐसा कोई act होगा which is harming the life and property of some individual, कि भाई झाड़ू फूक वगैरह कुछ तो लोग है, भूत बाधा वगैरह, all that nonsense that people do in India and also in abroad, exorcism and all that nonsense, अगर उससे life and property harm हो रही है, so in that case you have an obligation to be rational, और वहां पे obligation science भी support करेगा, because what they are doing is essentially non-scientific. But on the other hand, let's say you talk about abortion, or you talk about gene editing, or you talk about any other thing that is in the gray area, कि science तो allow करता है, and if you ought to be scientific you ought to do that, but इधर जाके एक ethical dispute वहां आ जाएगा। So उस ethical dispute को अगर हमें solve करना होगा, we cannot rely on science. If we rely on science, if we say ought to be, then जो science कहता है वही करना होगा, and sometimes it can lead to unethical things. So yeah. Okay, I think there I is think a कोई तो comment आया। misinterpretation here. Yeah. Yes, he's saying I'm not I'm not agree with Bhargav because the role of science does not curb the freedom of expression. It comes in later stage to test our hypothesis on ground of truth. So I think this is not what he meant, but Bhargav, you can explain further. Yeah, basically, I'm not sure what he meant by grounding truth, but okay. मेरा point ये था कि अगर science obligation हो गया, then everything that science claims we will have to follow it. Failure
to follow that scientific approach, failure to comply will lead us into jail. तो इन दैट केस जो भी फॉलो ज्योतिष के बंदे हैं, जो बात कर रहे हैं कि भाई ये स्टोन ले लो और इससे शनि गुरु वगैरह जो भी है जागृत हो जाएगा, अच्छा अच्छा दिन आएगा, they can talk about it, they can earn money on it. No one can force them to not do it. But if you ought to be scientific, in that case, you can force them to not do it and you can send them in jail. But it raises the ethical question कि उससे freedom of expression harm नहीं होता है या फिर होता है. So that's the issue. So here comes the thing about the need for scientific temperament and दोनों के views. तो राजकुमार पहले आप. सो यही चीज जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, द डिग्री ऑफ स्ट्रिक्टनेस, कि जब हम कहते हैं वी ऑट टू बी साइंटिफिक एंड देयर आर पीपल हु आर लाइक नो, वी हमें साइंटिफिक होने की आवश्यकता नहीं है. यहाँ पे क्या आता है, एक ग्रे एरिया आता है, जो ग्रे एरिया में बहुत सारी चीजें अब्यूज होती हैं, ना सिर्फ साइंस बल्कि फिलोसफी, फिक्शन, बहुत सारी और चीजें, इवन रिलीजन फॉर दैट मैटर. इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, देयर आर सर्टन क्लेम्स, सर्टन प्रैक्टिसेस that are neither rational, उसमें तो साइंटिफिक आ ही गया, they are neither nor scientific, nor logical, nor mathematical. प्रॉब्लम ये है कि जब इसको बहुत सारे लोग फॉलो करने लग जाते हैं, एक करे तो चलो वी कैन पॉइंट इट आउट, बट बहुत सारे लोग जब करने लग जाते हैं, प्रॉब्लम स्टार्ट्स देयर. एंड इंडिया में हम देख रहे हैं जिस तरह का मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है चीजों के प्रति, सूडो साइंस फैलता है, सुपरस्टिशन फैलता है, या एग्जिस्ट करता है, परसिस्ट करता है, उसमें हमें साइंटिफिक टेम्परमेंट एंड साइंटिफिक अप्रोच की आवश्यकता है. अब उसमें अगेन हम डिग्री ऑफ स्ट्रिक्टनेस की बात कर सकते हैं कि वी ऑट टू बी साइंटिफिक और डू वी ऑट टू बी रैशनल, और कितना स्ट्रिक्टनेस उसमें रखें हैं व्हेन वी आर सेइंग कि वी ऑट टू बी साइंटिफिक. वो अगेन एक मैटर ऑफ डिबेट या डिस्कशन है. बट अभी जिस तरह का सिनेरियो है, जैसे अगर मैं कुछ स्टडीज लेके आऊं आपके सामने, so there is one study, prevalence of superstitions in Indian society 21st century में. इसका रेफरेंस मैंने क्षितिज को दे दिया था, डिस्क्रिप्शन में Yes, ऐड कर yes. सकते हैं इसको. Just a minute. इसमें आप तो देख, मतलब हाँ मैं रेफरेंस के थ्रू ओपन कर लूँ ना फाइल, मतलब. हाँ दिखा दो. हाँ, तो which one? Can you please repeat again? Prevalence of superstitions in Indian society. Okay, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर है. मैं just give me a minute. Meanwhile you can continue. मैं जैसे ओपन करूँगा I'll let you know. श्योर, मैं आपको भेज भी देता हूँ जस्ट इन केस दोबारा ना मिले. हाँ, that would be better. Yeah, once you give the statistics, I'll have one point which will definitely demonstrate क्योंकि वो अभी recently हुआ है 2019 में 2020 ये भी में. 2019 का ही, अच्छा ओके. उसमें क्षितिज मैंने कई सारे वो किए थे, हाई इम्पैक्ट वाले भी रिसर्च पेपर्स आपको दिए थे. हाँ, वही तो. उनमें से कौन सा वाला है? That's I'm asking because there are many papers and articles here. तो एक मैंने भेजा है, ये इतना हाई इम्पैक्ट नहीं है, बट इट एक्ट्स एज अ फाउंडेशन टू व्हाट आई एम सेइंग. Okay. तो Give me a इसमें minute, एक I'll just. रिसर्च, हाँ, इसका सैंपल साइज थोड़ा कम था, लगभग 300 लोगों के साथ ये सर्वे किया गया था. Okay, so till that is opening, I have like okay, it opened. हाँ, तो इसमें सैंपल साइज थोड़ा छोटा है, 300 लोगों के साथ ये टेस्ट किया गया था. आगे उसके डेमोग्राफिक, सोशियो डेमोग्राफिक पूरा डेटा है. हम पेज 3 पे आ जाते हैं. इसमें आप देखेंगे द काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस दैट आर एग्जिस्टिंग, एंड उसमें फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं. सो यूज ऑफ लेमन एंड चिलीज आउटसाइड डोर 84%, नॉट स्वीपिंग फ्लोर इन इवनिंग 80.7%, ईटिंग कर्ड ये वगैरह, राइट. Then 11th number point, adding 1 rupee coin to a gift, 77%. Sneezing while starting a new work or stepping out might face problems, 78.9%. तो बहुत सारे, I don't need to read it out, but ये कुछ प्रॉब्लम्स है. देन एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हुआ था 2007 में, बहुत फेमस था. मैं ये भी भेज देता हूँ. उस डॉक्यूमेंट में मुझे मिलेगा नहीं कौन सा वाला मैंने बोला था.
But yeah, I have a very important question about this. So say पहले का भी point clear हो जाएगा. Sure. हाँ, so you can ask, मतलब Oh, whenever okay, you अच्छा, feel. मुझे लगा हाँ, there's yeah, we are pulling up the data. Okay, so basically my question was related to vaccines. So for example, अभी 2019 में COVID-19 आया था. In that case, Indian government mandated vaccines for the people of India. Mandated, even if people did not want to take that vaccine, it was a mandate. So वहां पर हमें ought to be scientific का दिखाई देता है. So the reason why we mandated the vaccines because they are supported scientifically and they will help us to reduce the reach of COVID-19. So I'll tell you something very interesting. US में there was no mandate. As a matter of fact, कैलिफोर्निया में जहां पर मैंडेट था वहां पर भी एक्सेप्शन था इस बात पर, which is called religious exception, which is basically the idea कि अगर मेरा religion मुझे वैक्सीन लेने के लिए मना करता है, then I have the freedom to not take the vaccine. So in that case, government cannot force you to comply. They cannot force to say that it is scientific, we ought to do it. But that was and would done you in India. support that decision? Yeah, क्योंकि इधर बहुत गवर्नर्स भी सपोर्ट कर रहे थे. And Now, for on top of it, example, no, I took a we vaccine. are good. That's good. I'm saying, see, someone has the freedom of choice, expression, and जो भी free will वगैरह हम बात करते हैं. And in that process, I'm somehow invading some other person's freedom of choice. Like, for example, you don't take a vaccine and we stay together. मेरे को जिंदा रहना है, मेरे को मरना नहीं है. You didn't take the vaccine because of your choice. But my choice is that I want to live. And अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया, मेरा वो choice छिन जाएगा scientifically. No, not really, because you are taking the vaccine. That's what the vaccine is for, right? It should prevent disease from coming to you. It shouldn't be. But it I no shouldn't comply. vaccine. So vaccine doesn't have 100% accuracy. Right. So I still can get infected, right? Right. So you can To some get extent, it is invading my freedom of correct. choice. But if it is not 100% accurate, even if I do take the vaccine, regardless, you can still get infected. Correct, but at least we are taking some precaution, right? Right. So in that case, what about the effects of the vaccines that many people had? क्योंकि बहुत से cases में, even US में भी बहुत से papers cite हुए हैं, and there have been cases in California जहाँ पर vaccine लेने के बाद people had severe effects that they did not want, and that's why Californian government, even though they had mandated it, they removed that mandate. US में overall there was no mandate for the vaccine. It was recommended that you take the vaccine, strongly recommended in some cases, but not a mandate. जो भारत में था. मतलब don't you think it's about कि how well that science was practiced? अगर वैक्सीन के ज्यादा साइड इफेक्ट आ रहे हैं या वैक्सीन is not working well, so rather than questioning on science, it's about that science was not very well practiced. That's why वो इतना अच्छे से हो नहीं पाए या इतने अच्छे से उस चीज Right. को कर नहीं पाए. Yeah. Correct. Yeah. So this Plus, raises a question that do we ought there's to be always scientific? क्योंकि उधर जो एक्सेप्शन प्रोवाइड किया था इधर, that was a religious exception. So it was not even an exception कि मुझे नहीं लेना वैक्सीन इसलिए. No, it's because my religion forbids me to take the vaccine. For example, Jehovah's Witness, they don't allow blood transfusion. So I have taken a course, I have taught a course on this, religious ethics and medical healthcare. So इसमें पूरे ethical basis religious ethics पर बात होती है, जहाँ पर Jehovah's Witness, they are kind of Christians, one of the sect of Christians, जो blood transfusion deny करते हैं. So in that case, अगर वो patient जो है उसको इस ट्रीटमेंट की जरूरत है जीने के लिए, और अगर वो बंदा कहता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए बिकॉज माई रिलीजन प्रोहिबिट्स इट, इन दैट केस एज अ डॉक्टर फॉर एग्जाम्पल, विल यू से नहीं नहीं तुम्हें ये ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, और विल यू से ठीक है भाई तुम्हें नहीं लेना है तो मत लो? So do we ought to be no. scientific and comply, make the person comply, or should we Again, say that it's there is your degree. freedom? Again, that degree of strictness. If that patient is in position to take give the consent, if Correct. he's Yeah. not in So the autonomy. So autonomy is yeah, very important, right? So, but once you correct. say ought to do it, we cannot have autonomy in murder. I cannot say, I'm autonomous, I can commit murder. No. As per law, you cannot commit murder. You ought not to commit murder. But in the case of science, that cannot be applied.
because if we ought to be scientific, then इस patient को blood transfusion लेना ही पड़ेगा, even though he does not want it or she does not want it, and he or she may not want it because उनके religion prohibit करता है उनको, जैसे कि Jehovah's Witness. So in that case, would you force the patient to comply because it is scientific, or would you just say कि हाँ भाई ठीक है, अगर तुम्हारा religion मना करता है तो हम नहीं तुम्हें treatment देंगे, even though you know that the treatment can save the person. Same goes with अच्छा, vaccine in that case. राजकुमार एंड भार्गव, फ्रॉम टू बोथ ऑफ यू, अगर मैं इस ought को ही should से रिप्लेस कर दूं, Yeah, That so would make should more sense, क्योंकि पूरा Yeah. एंकर वहीं से आ रहा है. सभी चीजों का काउंटर वहीं से आ रहा है कि ought to be scientific. उसको हम should से बोल दें या we must be scientific, ये बोलते तो it would make more sense to what must I is have still been. correct. Must Yeah. is still. So must is still you must not commit murder. That's still obligation. That's still deontic. Yeah. Yeah. So So what इधर should be the right vaccines. word there? हम लोग जो अभी का टॉपिक है उसके ऊपर फिर से आ जाते हैं, विच इज अबाउट साइंटिफिक टेम्परामेंट इन इंडिया एंड नीड फॉर साइंस कम्युनिकेशन. सो उसी के ऊपर मैं फिर से स्टार्ट करना चाहूंगा बिकॉज आई थिंक वो पार्ट इतना क्लियर नहीं हुआ था. तो भार्गव, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, कि डू यू थिंक दैट वी नीड साइंस कम्युनिकेशन इन इंडिया एंड व्हाट्स द स्टेट ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट इन इंडिया, एंड क्या उस चीज को प्रमोट किए जाना चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? Yeah, definitely. We definitely should promote science. That is what I have promoted science as a science communicator. As a matter of fact, I've promoted astronomy, और मैं astrology के खिलाफ बोलता था. But while doing that, I also used to teach people about Indian astronomy, जो actually observational astronomy है. I used to talk against Phala Jyotish, which is predictive astrology. आज भी मैं वही करता हूँ. I don't heed to Phala Jyotish people, astrologers. But the thing is, what I try to do is I communicate science. अगर कोई लड़का है, छोटा बच्चा है, उसको एक फल ज्योतिष कहता है कि भैया इससे शनि की माया वगैरह वगैरह, and then I am come there, instead of criticizing the Phala Jyotisha, instead of criticizing the actual astrologer, what I do is I try to explain to the child what science is. I try to explain to the child the astronomy behind it, and then I leave it to the child to decide what they want to do. अगर दोनों व्यूज सुनकर भी अगर वो बच्चा कहता है कि नहीं फिर भी मुझे आई लाइक टू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा मुझे लगता है कि प्लैनेट्स का असर होता है, इवन दो आपने मुझे एस्ट्रोनॉमी दिखाई है फिर भी. सो इन दैट केस द ऑटोनॉमी शुड बी देयर. द सब्जेक्ट शुड डिसाइड whether they want to pursue astrology or they want to believe in astrology or they want to believe in astronomy only. So in that case, I would promote astronomy. Yeah, right. And if we think about it, it even makes sense because अगर हम लोग हिस्टोरिकली भी देखें तो जो चीजें हम लोगों को अथॉरिटेटिवली लगा, हम लोगों ने जब भी इम्पोज किया हुआ है कि अदर थिंग इज रॉन्ग, हिस्टोरिकली कई बार ऐसा हुआ है कि वो चीज है तो हम लोग को एक स्केप्टिसिज्म भी अगर हम लोग डाल दें, मतलब बाकी तो है ही कि उसकी फ्रीडम ऑफ चॉइस और ये सब तो है ही, लेकिन एक स्केप्टिसिज्म की वजह से भी वी कैन नॉट लाइक नेसेसरीली कंप्लाई दैट. Correct. यस, Yeah. इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि तो साइंस कम्युनिकेशन का क्या ये अर्थ है कि हम सिर्फ एक्चुअल साइंस कम्युनिकेट करें या जो रॉन्ग साइंस है उसके बारे में भी बात करें? So I think by wrong science you mean pseudoscience basically. So the difference between so wrong science मतलब pseudoscience और non science में फर्क ये है कि for example ethics and mathematics come under non science, but they are not pseudoscience. So pseudoscientific people are basically the people who espouse कि हम scientific है, they hold fake conferences, they have fake journals जिसमें they publish, so that's pseudoscientific. So you should definitely try to show to the child कि भाई हाँ ये जो है उसके लिए evidence नहीं है, और evidence नहीं है मतलब इस hypothesis की likelihood कम है, which is what we discussed earlier. Yeah. Correct. So you should explain that to the child कि देखो अगर तुम्हें astronomy सीखना है, तो if you say कि ये अगर तुम stone पहनोगे गुरु के लिए तो उससे कुछ तुम्हारा अच्छा होगा, but अभी तुम देखोगे कि जुपिटर तो गैस जायंट है और सैटर्न तो गैस जायंट है, तो how can this stone which is a rock talk about what a gas giant is and how it affects you? और we could go even simpler, कि भाई नक्षत्र क्या है, कि नक्षत्र फलो ज्योतिष में आता है या नहीं, या सिर्फ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी है. So you should teach scientific facts to the child, but you should not force the child to comply. No, So here's that's the the thing. No one is forcing the child to comply anyway. Yeah. We are just educating people that this is correct, this is incorrect scientifically, maybe correct by any other method, but scientifically नहीं.
People who are associating misinformation or anything whatsoever might be provable, might be testable, verifiable in other way, बट साइंटिफिकली नहीं है, उसको पॉइंट आउट किया जा रहा है बेसिकली. लाइक फॉर एग्जांपल क्षितिज और मैं जो कर रहे हैं, इसके अलावा वी कैन इग्नोर अदर पीपल हु आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. अगर हम डिस्कस कर रहे हैं, हम डिबेट कर रहे हैं, तो हम अपने बारे में बात करेंगे. इफ आई एम डिबंकिंग पीपल हु आर फॉल्सली एसोसिएटिंग सर्टन थिंग्स टू साइंस, जबकि वो साइंस साइंटिफिकली उसका उल्टा बताया जा रहा है, सो दैट इज समथिंग that I call pseudoscience, and उसके बारे में हम लोगों को उजागर कर रहे हैं, बता रहे हैं और उसको डिबंक कर रहे हैं. जब इंडिया में एक एड ऑन जैसे ये करूंगा कि आज के टाइम में बिकॉज एवरीवन इज बिकमिंग कंटेंट क्रिएटर, तो इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन की भी लहर आ रखी है. अब बहुत सारे हम लोग सो कॉल्ड बाबा लोगों को देखेंगे या फिर कोई ऐसे मौलवी लोगों को देखेंगे जो रैंडमली बोल देते हैं कि कुछ ऐसा करने के लिए लोगों को प्रमोट करते हैं जो कि उनकी हेल्थ के लिए खराब हो. लेट्स से किसी डाइट से रिलेटेड कोई बात करती है, विच इज टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, अगर साइंटिफिकली देखे गलत इन्फॉर्मेशन है. सो देयर कम्स द रोल ऑफ साइंस कम्युनिकेटर कि वो साइंस तो कम्युनिकेट कर ही रहा है, साथ साथ बता रहा है कि डोंट डू दिस बिकॉज इट इज गोइंग टू अफेक्ट यू इन अ वेरी बैड वे. सो आई बिलीव कि एक साइंस कम्युनिकेटर का यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है. एंड माइंड यू, यहाँ पे ये बात नहीं आ रही कि द चाइल्ड और द व्यूअर मस्ट कंप्लाई विद व्हाट आई एम सेइंग. हम हमारे एटलीस्ट मैं अपने वीडियोस में तो ये कह रहा हूँ कि आप खुद रिसर्च करिए, खुद सोर्स मांगिए, खुद उसको एनालाइज करिए, खुद इंटरप्रेट करिए. बट अभी आप किसी चीज को अगर फैक्ट के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसका एविडेंस दे दीजिए. अब अगेन विल कम बैक टू कि क्या एविडेंस है, क्या क्या एविडेंस में कंसिडर होना चाहिए, बट कुछ तो दो यार. जस्ट स्टेटमेंट, हाँ, सिर्फ स्टेटमेंट कर देना, इट्स नॉट. और फिर उसको साइंस से स्पेशली फॉल्सली एसोसिएट करना, दैट इज प्रॉब्लमैटिक. वहां पे जब तुम एविडेंस दोगे, लाइक फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट माई सेल्फ. पहला जब मैंने डीबंक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक क्लेम के बारे में बात करा था जो गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट जो है, उन्होंने बात करी थी कि हवन करने से हवा से प्रदूषण कम होता है. ये उनका क्लेम था. उस समय तक उन्होंने कोई रिसर्च पेपर या कोई सोर्स साइट नहीं किया था. तो मेरे लिए बस एक ही प्रीमाइस था कि गौरव तनेजा ने कुछ बोला है और उसको मैं साइंटिफिकली डीबंक कर रहा हूं, क्योंकि हमें पता है किसी भी बायोमास का कंबशन किसी ना किसी प्रकार का पोल्यूटेंट हवा में रिलीज करता है, बायोमास का कंबशन. इस प्रीमाइस के बेसिस पे मैंने उनको डीबंक किया. अगले वीडियो में जब उन्होंने एक रिसर्च पेपर दिखाया, तो अब मेरे पूरा जो कन्वर्सेशन था, पूरा डीबंक था, वो उस रिसर्च पेपर पे एंकर हो गया कि मैंने रिसर्च पेपर को 1 घंटा बैठ के, 1.5 घंटा बैठ के पूरा तरीके से एनालाइज किया, एक एक वर्ड टू वर्ड. तो इस तरीके से तो मेरे को एक कुछ मिला एविडेंस उन्होंने दिया. अब एविडेंस इज नॉट ट्रू, वो तो हमने पहले एस्टैब्लिश कर दिया. उन्होंने बस एक एविडेंस दिया जिससे वो लाइकलीहुड दिखाना चाह रहे हैं उस प्रोपोजिशन के लिए, जिसको मैंने एनालाइज किया और पता चला कि एविडेंस सही नहीं है. ज्यादातर केसेस में आई वुड स्टिल अप्रिशिएट गौरव तनेजा कि उन्होंने कुछ दिया अपनी क्लेम के लिए, भले गलत ही दिया, लेकिन उन्होंने दिया जिसके बेसिस पे हम उस कंक्लूजन पर आ सके. ज्यादातर केसेस में जब सूडो साइंस फैलाया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है बाय एसोसिएटिंग विद साइंस, कोई सोर्स, कोई रेफरेंस नहीं दिया जाता और ज्यादातर जो दिया जाता है वो गलत होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, हमारे देश में पूरी दुनिया में टॉप 15 जो मोस्ट पोल्यूटेड, एयर पोल्यूटेड सिटीज हैं, उनमें से अगर 12 हमारे इंडिया के हैं, एंड देन वी हैव अ वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर हु इज सेइंग कि हवन करने से हवा से पोल्यूशन कम होता है. तो हम ऐसा करते हैं कि चलो सबके घर में हवन करते हैं और हवा से पोल्यूशन गायब कर देते हैं. अगर मैं एक नॉर्मल ये होता साइंस कम्युनिकेटर इस डेफिनेशन के हिसाब से कि सिर्फ मैं लोगों को एयर पोल्यूशन के बारे में एजुकेट करूंगा या एयर पोल्यूशन कैसे होता है यही करूंगा, देयर इज स्टिल अ लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर सपोर्टिंग दिस गाय हु इज क्लेमिंग समथिंग उल्टा. साइंटिफिकली जो होता है उससे कंप्लीटली उल्टा बोला जा रहा है. तो क्या मेरा रोल नहीं है उसको क्वेश्चन करना या उसको पूछना, उसको डिबंक करना? नंबर 1. नंबर 2, कई ये जो हम मेटाफिजिक्स की बात करते हैं या ऐसे डोमेन्स की बात करते हैं जो साइंस से बाहर है, एम्पेरिकल एविडेंस से बाहर है, हम साइंटिफिकली उसके बारे में इंक्वायर भी ठीक से नहीं कर सकते, लेट अलोन प्रूविंग इट वगैरह वगैरह. उस ग्रे एरिया को यूज करके जब ऐसे क्लेम बनाए जा रहे हैं जो एंकर तो साइंस के ऊपर ही है बट साइंटिफिकली उसको इंक्वायर नहीं कर सकते, दैट इज प्रॉब्लमैटिक आई बिलीव. और उन्हीं चीजों को मैं डिबंक कर रहा हूं. एंड ये मैं मेरे बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यहां मैं आया हूं सिर्फ वर्ल्ड ऑफ साइंस को या मुझे रिप्रेजेंट करने के लिए. मुझे नहीं पता बाकी साइंस कम्युनिकेटर्स क्या कर रहे हैं. आई डोंट क्लेम देम, आई वोंट डिफेंड देम.
मुझे कोई लेना देना। मैं तो अपने वीडियो में ही कहा हूँ कि कई सारे साइंस कम्युनिकेटर्स होंगे जो आपके बारे में वीडियो बनाते होंगे, बट माय अप्रोच इज कंप्लीट डिफरेंट। आई एम डायरेक्टली टॉकिंग यू और मैं आपसे सोर्स मांग रहा हूँ। जब मैंने हाइपर क्वेस्ट को डिबंक किया, उसमें भी बार बार मैंने कहा है कि मुझे सोर्स दो, मुझे रेफरेंस दो, ताकि मैं स्टडी करूं, फिर मैं बता सकूं। बिकॉज अभी भी लोगों को लग रहा है कि देयर इज सम पर्सनल ग्रजेस, जिसके कारण मैं उनको काउंटर कर रहा हूँ। So there's तो one thing. ये हाँ There are also yeah. Sorry for interrupting. But yeah, just one thing. There's हम्म there's also another category of science communicators. For example, आपने channel का नाम सुना होगा Logical I am. So जी उनके साथ मेरा एक podcast भी हुआ था. He never published it. And it was there was no ad hominem in that. कुछ भी नहीं उन्होंने publish नहीं किया वो. I have no idea why. But उन्होंने एक कोई तो एक बाबा थे who was talking about mind and how science cannot tell you about mind. Science cannot tell you about the self. So this is a very good conversation that the guy was teaching because he was talking about Atman, self, embodied cognition, whatever be the case. So yaha science communicator jo tha logical I am, he started basically ridiculing this person. और वीडियो चेक भी कर सकते हो। और इन्होंने बीच में ही एक सेंटेंस बोला कि भाई मन तो एक एब्स्ट्रैक्ट है, मन साइंस से प्रूव नहीं किया जा सकता, मन को आप दिखा दो तो हम उसका भी एक्सरे या स्कैन कर देंगे। सम नॉनसेंस दैट इट टॉक्ड हाँ, ये अबाउट। क्लिप देखा था मैंने। हाँ Yeah, हाँ while totally disregarding the fact that psychology is literally science of the mind. Psychology करेक्ट। considers the methods and applies it. And that is what the Baba, whoever that religious guy was talking about. कि self की जो idea है, वो science आपको नहीं बता सकता कि whether there is a self or not. Embodied cognition या फिर आप neuroscience भी देखेंगे, they cannot tell you whether there exists a self or does not exist. So that was a point that the religious guy was trying to address. And that was a philosophical discussion. इधर साइंस वो कम्युनिकेटर आया and he started ridiculing the guy and making such claims while totally disregarding psychology. So what about such science communicators who are deliberately trying to ridicule such people to gain traction? No, Maybe उनका I won't defend them. As I said, I Mhm. won't claim them. I won't claim Okay. their method. That is Mhm. definitely wrong. जब आप कह रहे हैं माइंड और ब्रेन के बारे में बात कर रहे हैं, there are fields in science that deals with mind and brain. Yeah. तो ऐसा आप completely उसको discard नहीं कर सकते कि नहीं तुम माइंड को लेके आओ, then हम उसको Mhm. logically prove कर देंगे। That is जनरल सेंस में बोले तो दैट इज बकवास। ऐसे नहीं Yeah. काम करता है कोई भी इंक्वायरी। सो आई डोंट क्लेम दैट। मैं ये कह रहा हूं कि अभी हम जो डिबेट कर रहे हैं या डिस्कशन कर रहे हैं, हम और आप बात कर रहे हैं, दैट इज बिकॉज यू सॉ समथिंग फ्रॉम माई कंटेंट Mhm. बेसिकली, एंड उसके बेसिस में यू फाउंड आउट कि हमें इस पे बात करनी चाहिए। तो आई एम Yeah. ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या आपने देखा जिसके कारण आपको लगा कि हमें इस पे बात करनी चाहिए, व्हाट यू फाउंड Yeah. प्रॉब्लमैटिक इन माई साइंस कम्युनिकेशन। Right. फिर मैं So आगे it's मैं बातें कर सकता हूँ। Yeah. So basically, it was 2 points. I had a hunch कि you might be a scientific realist. So basically, मुझे लगा कि आप ये मानते हो कि science जो कहता है वो पूरी तरह सच ही कहता है, and we should only trust about science. We should only trust what science says. Things And what grounded do in you scientific. realize now after talking? Yeah, based on when you said no for the first question, do you believe that science provides true descriptions? So when you said no to that, it means you are a scientific anti-realist. So you are in the same category that I am. So yeah, that says a lot of things. और दूसरी बात जो थी कि that's about obligation to be scientific. That is why I raised the question: Do we ought to be No, scientific? that was again kind of कह सकते हैं miscommunication. When we talk about ought, Right. the placement of ought, वहाँ पे we can have a better word there But to we have one basically instance in हाँ India where वो ought का डाला गया था. For example, the vaccine that I keep talking about. जो US, not just that vaccine, by the way, many treatments in the United States, they completely depend on autonomy. Whereas in the case of India, they are not so dependent on the autonomy. वैक्सीन being the most common example, क्योंकि अभी recently हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ठूस ठूस के वैक्सीन डाले ही है लोगों में, even though the people did not want to get vaccinated. रिलीजियस एक्सेप्शन बोलेंगे तो तब तो बहुत ही पीपल वुड हैव things get रिवोल्टेड। complicated. या सो बट यूएस में वो अलाउड था। फॉर एग्जांपल माय रूम, एंड दिस इज द फनीएस्ट थिंग, मेरा जो फ्लैटमेट था समर के लिए, ही वाज एन अंडरग्रेड स्टूडेंट इन डेविस, ही वाज अ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मेजर एंड ही रिजेक्टेड टू टेक द वैक्सीन बिकॉज ऑफ रिलीजियस एक्सेप्शन। ही वाज अ कैथलिक। उसने बोला कि नो, आई वोंट टेक द वैक्सीन, आई हैव गॉट द रिलीजियस एक्सेप्शन, एंड ही ट्राइड टू कन्विंस मी कि इस वैक्सीन से बाद में तुम्हें कैसे साइड इफेक्ट्स दिखने वाले हैं। आई डोंट वांट दैट। एंड ही वाज अ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग मेजर। So this is the thing that I keep talking about. कि इधर biomedical engineering majors, and he was pretty good. He was working in Genentech, which is a pharmaceutical company. So जब ये बंदा कहता है
कि no, I don't want to take a vaccine for religious exception, but that I'm just using it as an excuse. I don't want to take vaccine क्योंकि उससे साइड इफेक्ट्स बाद में आपको दिखेंगे, आपको फर्टिलिटी पर दिखेंगे, कुछ तो वो कह रहा था मुझे. I just ignored that guy. He was my flatmate. So this is Why the did you condition. take the vaccine? Why did you take the vaccine? Oh yeah, so as I said, I'm in favor of anything that's observable. अगर आप कहेंगे कि इससे मेरे symptoms prevent हो सकते हैं या फिर मुझे होगा ही नहीं वो, then yeah, I'm in favor of that. So he was focused on more on the unobservable aspects. Yeah, he was claiming, हाँ. yeah, he was claiming कि side effects होंगे, and उतना ही नहीं, not just him. There were many people in the United States who were against taking the vaccine. Some of them were from religious exception category. They were claiming हमारे लिए religious exception है, and we have the autonomy. So they rejected. They did not take the vaccine. Booster dose So भी नहीं isn't ली. that problematic for the That is society? definitely, yeah, that is definitely problematic. But then again, it raises the question कि should it be obligatory कि हमारा autonomy भी बर्बाद कर दे, कि वैक्सीन लेना ही पड़ेगा, तुम्हें लेना हो या नहीं. You don't have a choice. You have to take the vaccine. So they should provide a pretty good reason for not taking the vaccine. No, even if they are not inferentially justified, they are using religious exception. कि मेरा religion prohibit करता है, my religious views are as much important as per the Fourth Amendment, because Fourth Okay, Amendment says you. सॉरी मैं Yeah. डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ. अभी हम लोग 1 hour 55 मिनट्स हो चुके हैं हम लोगों को ये Okay, okay. डिस्कशन डिबेट स्टार्ट किए हुए. Yeah. 5 मिनट के अंदर वी आर एमिंग टू कंक्लूड दिस. तो Okay, yeah. मैं बेसिकली आप दोनों से एक-एक बार पूछूंगा कि आप दोनों का क्या बेसिकली इस पूरे डिबेट का कंक्लूजन रहा हुआ है, एंड मैं भी एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स लूंगा. एंड भार्गव, देयर वाज अ लाइक गुड क्वेश्चन लाइक फॉर यू, कंटिन्यूअसली आया जा रहा था, तो एक बार कंक्लूजन देने से पहले वो वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, बिकॉज वो बहुत बार आया था. मैंने बोला बाद में लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा Okay. डिबेट से अलग था. So the question is कि does classical logic explain everything, the nature of reality? If not, what are the flaws of classical logic? No, classical logic doesn't aim to explain the nature of reality. Classical logic is syntax. Classical logic has certain laws, like law of non-contradiction, law of excluded middle, law of identity, X also quadruplet bit. So what classical logic aims is to make language formally consistent. That is what classical logic does. और उसके एप्लीकेशन हमें मैथमेटिक्स में दिखाई देते हैं, where we have first order logic. उसके एप्लीकेशन हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में दिखाई देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दिखाई देते हैं. And I don't think there are any flaws as such to classical logic. If you reject one of the laws, what you land into is non-classical systems, जैसे कि dialetheism, where you believe contradictions are true. And I think that's absurd. Many of the logicians today also believe that's absurd. If you're a dialetheist, basically you're saying that a proposition and its negation both can be true simultaneously. So, for example, it's like saying Buddhism is both true and false simultaneously, or the claims of the Buddha are both true and false simultaneously. The claims of Nagarjuna are both true and false. So this is absurd. That's why you need classical logic. You need bivalency, because that's literally how our rational thought proceeds. If anything can be anything, जो non-classical logic में होता है, like dialetheistic tendencies, then that's the end of all rational thought process. So yeah, basically classical logic does not aim to explain the nature of reality. It only aims to make your propositions formally consistent. It's a formalism. It achieves syntax, not semantics. Logic doesn't care about truth value of propositions. It only cares about what follows from what. Okay, cool. तो अब हम लोग हमारे फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आ जाते हैं. सो राजकुमार. सो अभी मैंने एक कमेंट देखा, तो उसी से मैं कंक्लूडिंग मेरा रिमार्क दूंगा. वो कहा जा रहा है कि मैं कह रहा हूं कि हवन से पोल्यूशन हो रहा है, या हवन से ही सारा पोल्यूशन हो रहा है, बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं. हैव यू हर्ड ऑफ फूड फार्मर? तो फूड फार्मर एक क्रिएटर है जो पैकेज फूड या ये सब के बारे में कंटेंट बनाता है. उसका ये कहना है कि जंक फूड is not bad. We accept junk food is bad. I also eat it. But junk food labeled as good food is bad. So same way, जब हम सूडो साइंस की बात करते हैं ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हवन से पोल्यूशन हो रहा है तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि हवन बंद कर दो. या जब मैं बोल रहा हूँ कि कोई ये आके बोल रहा है कि भगवान एग्जिस्ट करते हैं, वो मेटाफिजिकल रियल में बात कर रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ नहीं, भगवान एग्जिस्ट नहीं करते हैं. जब वो साइंटिफिकली उसको प्रूव करने जा रहा है
या साइंटिफिकली किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के उसने जोड़ दिया वहां पे, या ये कह रहा है कि हवन से पोल्यूशन कम होता है, इनफैक्ट उल्टा साइंटिफिक मेथड का उल्टा बता रहा है. So again, bad science labeled as good science or science is problematic. That is what I have been debunking in my videos. तीन ही debunk videos अभी तक मैंने बनाया है out of literally hundreds of videos that I've produced in past 8 years. तीनों ही वीडियो में मेरा प्राइमरी जो एजेंडा रहा है वो यही रहा है कि bad science that are labeled as good science or science should be pointed out, should be called out, and also the people peddling it. And in that process, ask them for certain sources of references or citations जिसको आधार पे मैं अपना आर्गुमेंट बेसिस कर सकूं, वरना वो आर्गुमेंट यही रहेगा कि तू गलत है. मैं बार बार आऊंगा, वो बार बार वीडियो बनाएंगे और यही निकलेगा तात्पर्य कि तू गलत है, तू गलत है, तू गलत है. अभी जब हम इतने सारी चीजों पे बात करें, आप जब कोई फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर बता रहे हैं या कोई फिलोसोफर बता रहे हैं, उसके पूरे आइडियोलॉजी मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं या टाइप्स ऑफ एविडेंस बता रहे हैं, तो इसमें कैसे मैं शांति से आपकी सुन रहा हूँ, उससे एग्री कर रहा हूँ, कुछ चीजें मुझे प्रॉब्लमैटिक लग रही है तो मैं उसके बारे में बता भी रहा हूँ. लेकिन आप आए और आप कहें कि नहीं ये है ऐसे ही, तेरे को डाउट है तू प्रूफ कर, तेरे को डाउट है तू डिस्प्रूव कर, दैट इज रॉन्ग, दैट इज प्रॉब्लमैटिक एंड दैट इज समथिंग दैट आई हैव बीन कॉलिंग आउट. एंड वही मेरा एजेंडा रहा है इवन फॉर दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, कि यहाँ पे अगर मैं लिटरली यहाँ पे सारे पेपर सजा के बैठा हूँ कि जहां भार्गव ने कुछ ऐसा क्लेम किया जिसको मैं पॉइंट आउट करते आया हूँ कि दिस इज इट, ये है, तुमको मानना पड़ेगा, वहां पे मैं ये सारे पेपर्स में से कुछ ना कुछ मुद्दा उठाता. बट आई एम ग्लैड यू डिडंट से दैट. आई एम ग्लैड आपने वो स्टार्टिंग में जो थीस्ट वाला पॉइंट था, आप थीस्ट में आपने एग्नोस्टिक बोला, तो वी आर ऑन द सेम पेज. सो मेरे वो सारे क्वेश्चंस धरे के धरे रह गए, हो सकता है मैं बाद में आपसे पूछूं. बट that is what my approach is with my videos, and I don't think that is problematic. In fact, I'm fighting something that is problematic. That is what I'll say. Bhargav. Yeah, so basically my concluding remarks would be that I would advocate for people to aim for empirical adequacy, not for scientific realism. तो हमें empirical adequacy के लिए aim करना चाहिए. We should be constructive empiricists instead of being scientific realists. So we should be agnostic towards unobservable entities. As long as they are satisfying empirical adequacy, हमें theory accept करनी चाहिए, but unobservable entities को मानना जरूरी नहीं. And about evidence itself, I think evidence does not mean proof. Just because someone says there is evidence for XX hypothesis, it does not mean it is proof. Evidence simply increases the likelihood of the hypothesis. And we also established that Rajkumar and I both are scientific anti-realists, both are agnostic. And the last thing is about ought to be scientific. इसके बाद काफी, sorry to interrupt, इसके बाद काफी इन झमेले बंद हो जाएंगे since we are on the same page. Right. Yeah. And the last thing about ought to be scientific, the reason why I asked that question is particularly related to the vaccine and abortion stuff and veganism stuff. And I believe it is not the case that we ought to be scientific. I believe we ought to be rational. अगर हम साइंटिफिक मेथड को ऑब्लिगेशन बना, साइंटिफिक अप्रोच को ऑब्लिगेशन बना देंगे, देन हमें वो वैक्सीन के में भी अप्लाई करना पड़ेगा, एंड इन दैट केस इट कैन वायलेट ऑटोनॉमी एज वेल, पर्सनल ऑटोनॉमी. सो आई थिंक it is not the case that we ought to be scientific. We ought to be rational, but autonomy rehni chahiye. If the person wants to continue pursuing astrology, he can do so, he can talk about it. If the person wants to pursue not taking the vaccine for religious exception, I think they should have the choice for doing that. So yeah, that's the I think that's the last thing that we discussed. And about science communication, so either way I'm in favor of science communication because I've done that in the past. So yeah, I what think you are that against is wrong science communication, right? Yes, correct. Yeah, I'm against treating science itself as a religion. Scientism के में against हूँ. उसके तो हम भी against हैं. It's like we are fighting the theism and somehow एक नया theism बन गया. Yeah. In the process of fighting the theism. So वो that is again wrong. So that is not solving any purpose. And I would also like to add जो भार्गव ने लास्ट में कहा कि we ought to be rational. उसके अंदर ही साइंटिफिक आ गया. इट्स नॉट लाइक साइंटिफिक बाहर है. तो व्हेन वी से वी आर रैशनल, वी आर आल्सो साइंटिफिक. इट्स नॉट लाइक यहाँ कोई ऐसा कंक्लूजन निकला कि नहीं हमें साइंटिफिक नहीं रहना. फॉर पीपल, फॉर ऑडियंस, आई एम सेइंग दिस. व्हेन वी से वी आर रैशनल, वी आर आल्सो साइंटिफिक एंड आल्सो अदर. Correct, yeah. It's just that when we are rational, it gives us also a reason to sometimes reject scientific things in favor of some other non-scientific things like ethics. It gives us the flexibility. Yeah. Correct, yeah. Perfect. Yeah. Great.
सो आज का जो डिबेट तो कम डिस्कशन ज़्यादा रहा था एंड आई एम ग्लैड कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ, राइट? मैंने तो लाइक बहुत प्रिपेयर कर रखा था कि इन केस बहुत हीटेड आर्गुमेंट हो गई तो उसको कैसे डील करना है, भाई क्या करना है, बट मैं आप लोगों को अगर इसको लैपटॉप को कैसे दिखाऊं, यहाँ देखो पेपर्स हैं भाई। मैं आप बोल रहा हूँ कि क्यों मैंने इसको प्रिंट कराया भाई, इतने सारे मेरे पास आर्ग्यूमेंट्स थे बट वो आर्ग्यूमेंट्स तक हम पहुंचे ही नहीं। लिटरली 50 पेज के मैंने तो वो निकाले थे, वो एथिज्म वाले आर्ग्यूमेंट्स, व्हाई गॉड माइट नॉट एग्जिस्ट, बट वो आया ही नहीं। खैर Oh, उसके if बारे में राइट, कभी राइट। और we हम can conduct another podcast on this, because नहीं, if वी शुड। yeah, atheism पे अगर होगा तो I have very strong arguments against atheism, और अगर theism पे किया I have also strong arguments against theism. So I both of have them would very be strong arguments arguments for against against. theism. You Hmm. can act as a atheist. You can act as a theist, and I'll act as a atheist for time Okay. being in that podcast, and we can discuss certain things because I would. मैं honestly बताऊं, there was so many doubts, so many questions. I had more questions than answers in my mind. Hmm. Everything is messed up here when we talk Okay. about philosophical stance. इसीलिए मैं जब आपसे बात हो रही थी पर्सनल, मैंने कहा कि even I don't know what I am. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि what would you identify me as? Right. Realist या anti-realist, because I have no clarity about that. I Hmm. haven't settled for any structure as of now. But जैसे ही ये debate या discussion plan हुआ, I went on reading some things, a lot of things in fact, and वो सवालों की मात्रा जो है ना वो बढ़ चुकी है. Hmm. Yeah. I need to discuss those things, but not right now. अभी 1 महीने तक तो मैं कुछ फिलोसफी नहीं पढ़ूंगा, मेरा अब दिमाग खराब हो गया. अब 1 महीने बाद ही हम लोग प्लान करेंगे कुछ भी. So yeah, we should be doing that. That would be a Okay. good thing. In fact, इससे जो misconception है ना लोगों के बारे में कि we are somehow against each other या each other's work, वो नहीं होना चाहिए. Right. That would clear a lot of things. Yes. सो आई Correct. गेस ये डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उन लोगों के लिए भी जो लोग पहले से ही नोशन बना के चले हैं, बिकॉज दिमाग में क्या रहता है कि हम लोग आइडिया बनाए थे कि इसने ऐसी बात की तो ये ऐसा ही पर्सन होगा, तो Hmm. वो जो एक डिस्टिंक्शन बन जाता है उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है कि एक पर्सन की पर्सनालिटी बहुत स्पेक्ट्रम में रहती है, तो वो वाइल वो एक साइड को सपोर्ट करते हुए वो स्केप्टिसिज्म भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई एम ग्लैड कि ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से हुई है. So on that note, I would like to end like today's debate. Thank you so much, Rajkumar. Thank you so much, Bhargav, for being Thank you so wonderful. much, Kshitij, for Yeah. moderating this particular thing. Yep. प्रॉपर स्ट्रक्चर में हम ये कर पाए, वरना तो बहुत मेस्ड अप हो जाता विद माय ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन. एंड भार्गव, थैंक यू सो मच फॉर Yeah. गाली गलौच Likewise. नहीं हुई, चाय नहीं फेंका हमने, झगड़े नहीं नहीं. हुए. थैंक यू सो मच फॉर जहीन तो दैट. उसी के लिए आया था कि कुछ लड़ाई वगैरह हो बढ़िया. वो तो वो हाथापाई भी हो. कह रहे हैं किसने सर फोड़ा, मैं बोला वर्चुअली क्या ही सर फोड़ेंगे भाई. Right. चलो ठीक है guys, let's end this then. Okay. Alright, ओके, thank you everyone for ओके, joining. It was great. Bye. थैंक यू सो मच. मैं अभी कमेंट्स पढ़ूंगा जो भी आए.